Okay. Good evening, everyone. I hope you're all doing great. I'm Himanshu Gupta, student guide here at the Career Council SCS. I'm thrilled to welcome you to this eagerly awaited session, SDE2, which is a follow-up session to our previous session on SD roles, which was SD1. Today, all your queries about SD placement preparation for the time left would be answered, and that would help you plan your career. So before we dive in, let me give you a quick overview of what the Career Council is all about. Okay, so at the Career Council, our mission is to support students like you in navigating your career journeys. We offer a range of resources and programs, including strategies for successful placements through sessions like Acing Placements and Acing Internships. For securing valuable internships, and our other initiatives will include the intern diaries, placement diaries, career bootcamp, and the AMA sessions. So our today's session is a part of Acing Placements. For this, we have three of our seniors, Navya Dingra Bhaiya, who is placed in Clear, Kshitij S. Bhaiya, who is placed in Optim, and Nitin Divedi Bhaiya, who is placed at Misho for the SD role. Now, I would like to invite each of you to introduce yourselves to our audience. Okay, so hello all. I'm Navya Dhingra, graduated recently from the Civil Engineering branch and currently placed as Software Engineer 1 at Clear and working in the front end part for the company. That is all about me right now. Hi all. Am I audible? Yes, Bhaiya, you're audible. Okay. So hi all, I'm Shijit and I have completed IDD in civil engineering this year and I have joined Optim as a front-end developer now. So currently I'm working in the company and like nothing much to introduce more now. Yeah, right. Okay, hi guys. Uh, I hope you all are doing very well. Also, myself Nitin Dubedi, and I'm 24 graduate from IIT BHU from Civil Department, and I'm back-end engineer at Misho, and I'm also working at a logistic company at Misho, that is Volmo, if you have heard about it. So yeah, a nice journey about the placements, and also I'm enjoying working at Misho also. That's all about me. Thank you so much for the introduction, Bhaiya. Now, could you please walk us through your personal journey in preparing for an SD role? Like, what were the like some of the key milestones that you focused on, especially? Yeah, Navya should start. Okay, Navya. Yes, Bhaiya. thank you, Nitin. Okay, so if I talk about myself, I started my software journey after third semester, and earlier, my focus was I didn't have much guidance, so what I tried was just solving some previous year questions and all. But then shifted my focus more towards DSA and prepared for the different DSA topics and tried giving contests too for the same on Lead Code. So that was all before the internships. And after I was sorted during the internship, my focus was much on then just preparing more of projects and therefore preparing more of DSA topics so that the things which I left out during internships, which didn't allow me to get placed in certain companies, I could cover those and complete them during the placement time. So that is pretty much about from my side. Okay, Shijit Bhaiya, I would request you also to please. Okay. So like talking about my journey, actually I started proper SD like DSA preparation and everything after my second year, like in the summer vacation, like during Corona time only. So I started with lead code and code forces and learning basics of DSA
At first, I didn't get much interest in that. Like, it's mostly problem solving, learning a lot, and I didn't get interest, and I just left it there. Then I moved to software development, mostly web development, and I got interest in that. So I have done several projects at that time. Like as usual, everyone do. Like I started with Amazon clone only, and did several projects. Other than that, also in front end and some in full stack. And I was able to crack a hackathon at that time, and it helped me to get some internship. And by that time, I completed like two internships, like one in Cisco Incubator and one in a startup named Varanasi. Then during the internship season, like after completing this internship only, like internship season in college, I prepared DSA, not like any advanced topic or anything, mostly like common topics for DSA, and I prepared that, and I was able to crack Cisco in internship season. And like after internship season, once we get an offer, most probably we'll be leaving DSA completely. I also did the same. I left DSA completely. I haven't done anything during that time. And by the time I did another internship, that was also in front end development only. So while after completing this Cisco internship, I was left with 4 internship totally, and like 1 year of gap in DSA preparation. So after like in 2023 summer vacation, after the vacation, I started DSA preparation only in August or something, I guess. Like after a 1 year gap, I prepared at that time. I started doing it, and like or at that time we know that we have only 1 week time, so we needed to dedicate almost the entire day for preparation, doing all the topics. So it was so hectic at the last moment. But if you are trying to do it early, it's very good. For me, like I did it at the last time, so fine only. And I did it, and you need to. I covered this DSA topics in between. Then computer fundamentals also I have done during that time. Then yeah, like I'll explain more when we are coming to this preparation strategies and all. For now, like I can say this much. Okay, so before I start, I want to know everywhere here is from fourth year or also there are third year rights also. Hello, am I audible? Yes, Bhaiya, you are audible. So most of you are from fourth year, right? Most of you guys are from fourth year. Okay, okay, got it. So my journey starts from actually I was like हमारा जो college था हमारा start हुआ था college corona phase में and I was like we don't have anything to do in corona phase and जो hype उस time पे चला था coding के लिए it was super hype I can say मतलब YouTube पर भी आप जहाँ भी search कर रहे हो it was like coding ही है यार coding कर लिया then placements are done. So सभी ने coding start की थी and I also started coding and first of all I started with Python language. First year में मैंने Python language की थी and I was like कि यार ठीक है अभी तो condition मेरी better चल रही है बाकियों से तो बट दैट वाज नॉट लाइक दैट सो जब मैंने सेकेंड ईयर में आया तब मैं स्विच किया कोडसेप पर एंड आई स्टार्टेड गिविंग कॉन्टेस्ट देयर कोडसेप पर एंड आई वाज लाइक कि मुझसे एक क्वेश्चन बनते थे दो क्वेश्चन बनते थे एंड दैट वाज नॉट टू गुड फॉर मी आल्सो एंड वी स्टार्टेड इन अ ग्रुप एंड वो ग्रुप पीयर ग्रुप बहुत अच्छा था सो आई वाज नॉट वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट माई परफॉर्मेंस सो मैंने स्टार्ट किया कोड फोर्सेस पर मैंने अपना अकाउंट बनाया सेकंड ईयर में बेसिकली सेकंड ईयर के स्टार्टिंग में मैंने अपना कोड फोर्सेस पर अकाउंट बनाया एंड आई स्टार्टेड गिविंग कॉन्टेस्ट देयर ऑल्सो आई यूज टू सॉल्व ओनली max to max one problems there for 1 month after starting giving the contest so एक क्वेश्चन बनते थे कभी जीरो बनते थे मतलब नहीं बनते थे एंड बट मैं प्रैक्टिस नहीं किया करता था उस टाइम पे सो मैंने कॉप्स से थोड़े बहुत आइडिया लेना स्टार्ट किए कि भाई क्या क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए उस टाइम तो मैं बेसिकली सीपी के साइड जा रहा था कि यार कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर लेते हैं एंड एवरीथिंग विल बी लाइट फॉर मी लाइक डीएस से तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा उसके बाद मतलब ऐसा मैंने सुना था सो सेकेंड ईयर में मैंने प्रैक्टिस ही की थी एंड कोड फोर्सेस पर ही प्रैक्टिस की थी एंड कोडसेप पर भी कभी कभी कर लिया करता था सो थर्ड ईयर आते आते थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस बेटर हो गई थी बट
मैंने CS फंडामेंटल्स पर बिल्कुल भी फोकस नहीं किया था। ऑल्सो आई डिडंट फोकस ऑन वेब डेवलपमेंट ऑल्सो। सो मेरे पास में प्रोजेक्ट्स भी नहीं थे उस टाइम तक। सो मैंने क्या किया था कि जो हमारी गर्मियों की छुट्टियां होती हैं ना, मतलब एज लाइक समर वेकेशंस होती हैं, हमारे कॉलेजेस खुले थे इन द लास्ट ऑफ द सेकेंड ईयर के लास्ट के एक मंथ में हमारे कॉलेजेस खुले थे। एंड देन आई गॉट टू नो कि यार प्रोजेक्ट्स भी बनाने पड़ते हैं एंड CS फंडामेंटल्स भी कुछ कुछ तो पढ़ने पड़ते हैं। तो उस टाइम पे मैंने ऊपर ऊपर से ऊप्स कर लिया था CS फंडामेंटल में, एंड एक उन 2 महीने की जो छुट्टियां थी उनमें मैंने वेब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट बना लिया था। इट्स लाइक मोर अबाउट फ्रंट एंड प्रोजेक्ट रादर देन बैक एंड प्रोजेक्ट। बैक एंड में उतना कुछ यूज नहीं हो रहा था, जस्ट लाइक एक दो APIs बना ली थी एंड ऑल्सो डेटाबेसेस भी नहीं थे इनफैक्ट, तो कुछ नहीं था, जस्ट एक फ्रंट एंड था। एंड आई वाज लाइक मुझे आई सपोज टू बी लाइक आई एम द वेरी बेस्ट गाय ऑफ द कॉलेज कि मेरी तो लगनी ही चाहिए इंटर्न। उस टाइम तक ऐसा था मेरा, बट आई वॉज रॉन्ग ऑल्सो। बाद में मुझे ये पता भी चला, बाद में मुझे ये रियलाइज भी हुआ। इन द बिगिनिंग ऑफ माई इंटर्नशिप सीजन आई यूज टू ब्लेम लाइक यार इसकी लग जा रही है, इसकी लग जा रही है, मेरी नहीं लग रही है, मैंने इतने क्वेश्चंस लगाए, मैंने मेरी ये रेटिंग है, मेरी ये एंड ब्ला 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 सच टाइप ऑफ थिंग्स। बट बाद में मुझे रियलाइज हुआ बाय द एंड ऑफ दिसंबर, थर्ड ईयर में दिसंबर में मेरे को रियलाइज हुआ यार नहीं, इफ नहीं हो रहा है देन कुछ ना कुछ तो गलती है मुझमें कि नहीं हो रहा है। सो I realized and I talked to my very of my seniors +1 and mostly I talked to Vinayak Bhaiya and some of you aware about him. So विनायक भैया से मैंने बात की एंड मैंने उनको अपनी बात बताई कि यार ऐसा हो नहीं रहा है, मेरे से इंटर्नशिप्स लग नहीं रही हैं, मतलब मुझे नहीं लगता मेरी लगेंगी। So he said कि यार मतलब you should focus on your rather than blaming on the system or rather than blaming on yourself, you should focus on what should you do right now। अभी तुम क्या कर सकते हो फॉर योर प्लेसमेंट्स, बिकॉज 6 मंथ बाद तुम्हारे प्लेसमेंट्स भी आने वाले हैं। तुम अगर ऐसे ही ब्लेम करते रहोगे एंड रोते रहोगे देन यू शुड ऑल्सो लूज योर प्लेसमेंट्स। सो विनायक भैया वॉज माई मेंटर एट माई इंटर्न। ओके, नाइस टू नो हियर। सो तुमने थॉटस्पॉट में काम किया है क्या? whoever yes typed that, so तुमने थॉटस्पॉट में काम किया है। ओके अभिषेक, सो नाइस। तो उनसे मेरी बात हुआ करती थी एंड ही सेड कि यार कभी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लेना। आई ऑल्सो उस टाइम तक भी मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था वेब डेवलपमेंट पे, और मुझे करना वेब डेवलपमेंट ही था एंड ऑल्सो CS फंडामेंटल्स भी मेरे क्लियर नहीं थे। ये बात है टिल माई दिसंबर थर्ड ईयर। ओके, सो मैंने स्टार्ट किया, जो ठंडी की छुट्टियां होती हैं एक मंथ की या दिसंबर वाली छुट्टियां होती हैं, उसमें मैंने CP में जो जो गैप्स थे उनको फिल आउट करना शुरू किया। कभी कभी मैं सीनियर्स को या फिर अपने फ्रेंड्स को बुला लिया करता था कि यार ये चीज़ें नहीं हो रही है मेरे से, मेरे को समझा दो। तो वो चीज़ें जो गैप्स थे उनको बेसिकली फिल करने की कोशिश की, खासकर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में। एंड फ्रॉम जनवरी मैंने काफ़ी सारे सीनियर से बात की, काफ़ी सारे सीनियर से, लाइक केमिकल से, सिविल से एंड मैनी ऑफ द सीनियर्स जो हमारी रेंज के हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट नॉन सर्किटल स्टूडेंट्स बिकॉज आई एम फ्रॉम नॉन सर्किटल। सो मैंने नॉन सर्किटल स्टूडेंट से बात करनी शुरू की, सीनियर से बात करनी शुरू की कि भाई मुझे क्या करना चाहिए अब, बिकॉज एट दैट लेवल आई वॉज 1700 प्लस एट कोड फोर्सेस और मैं स्टेबल 1700 प्लस कोड फोर्सेस पर हो गया था एंड आई वॉज वेरी मच कॉन्फिडेंट कि यार लाइक OA में उतनी प्रॉब्लम मेरे को नहीं होगी। देन दे यूज्ड टू से कि यार अब तुम्हें CS फंडामेंटल्स पर फोकस करना चाहिए एंड यू आर नॉट वेरी मच कॉन्फिडेंट ऑन वेब डेवलपमेंट ऑल्सो, यू डोंट हैव एनी सच टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स कि तुम उसको शो कर पाओ, तो तुम अपने प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू करो। एंड आई वाज लाइक कि मुझे तो अपना कॉलेज भी संभालना है एंड ये भी करना है, सो हाउ कैन आई डू इट। तो कहते हैं कि यार ठीक है, मतलब सभी को संभालना पड़ता है, यू आर नॉट द फर्स्ट पर्सन टू हैंडल इट। सो मैंने स्टार्ट किया जनवरी में, CS फंडामेंटल करने स्टार्ट किए, लाइक 4 CS फंडामेंटल्स थे तो मैंने जनवरी में स्टार्ट कर दिया एंड उसके बाद टिल माय समर वैकेशंस ऑफ एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, टिल माय समर वैकेशंस मैंने CS फंडामेंटल्स अप्रोक्सीमेटली एक बार तो खत्म कर दिया था। सो इन माय समर वैकेशंस आई टुक बिकॉज विनायक भैया ने मुझे बोला था कि यार तुम एक काम करो, तुम एक कोर्स ले लो यूडमी पर, एंड आई टुक दैट कोर्स and that is basically based on the back end development and MERN stack पर based था वो basically। so मैंने वो कोर्स लिया एंड उसमें भी एक प्रोजेक्ट्स बना रखे थे। उसके बाद भी मैंने एक खुद का प्रोजेक्ट बनाया जो कि बेसिकली काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट था
मतलब काफ़ी अच्छा मीन्स कि इट्स अ काइंड ऑफ मीडियम काइंड ऑफ प्रोजेक्ट एंड मेरे बेसिक्स बेसिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट माई theoretical knowledge of multi-stack or my project. So because cross question हो जाते थे मेरे से if someone is saying कि why what why this only how, so I was used to I was supposed to say something at least कि हाँ ये इस कारण से हो सकता है. I'm not very much confident कि हाँ यही होगा, but I was supposed to like हाँ इस कारण से हो सकता है. And after that I used to हमारे colleges भी open हो गए थे and उस साल I get to know कि हमारे placements भी बहुत अच्छे नहीं जा रहे थे. So ये थोड़ा सा हाइप हो चुका था कि यार प्लेसमेंट अच्छे नहीं जाने वाले, तो थोड़ा सा बीच में 1 मंथ का ब्रेक हुआ था मेरा बिकॉज मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था. एंड देन मैंने फिर से स्टार्ट किया यार CS फंडामेंटल्स का रिवीजन एंड थोड़ा बहुत बीच बीच में वो किया करता था, प्रोजेक्ट्स भी देख लिया करता था एंड आई यूज्ड टू स्टार्ट लीड कोड. एंड जैसे ही मैंने कोड फोर्सेस या कोडसेफ से लीड कोड पर स्विच मारने की कोशिश की एंड यू विल नॉट बिलीव मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की है लीड कोड पे, बट मेरी अंडर 150 रैंक्स तो बहुत नॉर्मली बन जाया करती थी. एंड ऑल्सो मेरी बेस्ट रैंक वर्ल्ड रैंक 20 रही है AIR2. सो मतलब थोड़ा सा वो फ्लो में हो जाया करता था उस टाइम पे. लीड कोड उतना कठिन नहीं लगता था जब आप कोड फोर्सेस से स्विच मार रहे हो तो. सो ऑल्सो एट दैट टाइम मेरी रेटिंग भी 1800 प्लस हो चुकी थी जब मैं बैठ रहा था बेसिकली प्लेसमेंट्स में. ऑल्सो जब प्लेसमेंट्स स्टार्ट हुए तो इन द वेरी बिगिनिंग प्लेसमेंट्स भी मेरे साथ नहीं थे, बहुत ज़्यादा अच्छे टेस्ट नहीं जा रहे थे तो मुझे थोड़ा सा तो गिल्ट रह रहा था कि यार ये प्लेसमेंट्स भी नहीं अच्छे जा रहे, इंटर्न्स भी नहीं अच्छे जा रहे. सो मेरी 5 शॉर्ट लिस्ट निकली थी टोटल प्लेसमेंट्स में और अप्रॉक्सीमेटली पांचों के पांचों डे 1 की थी. मतलब ये भी थोड़ा सा शॉकिंग लगेगा. एंड मेरी जिस कंपनी में लगी है वो मेरी 5th कंपनी थी. सो इट वाज माय लास्ट होप ऑल्सो. या उसके बाद लग गई. देन लास्ट सेमेस्टर तो जो करते हैं सब वही मैंने भी किया, मजे किए और क्या. सो दैट्स ऑल अबाउट मी. Thank you, Bia. Now the audience will have the opportunity to ask their questions. So I'd like to hand over the session to you so that you can proceed while answering the questions. I would request the audience to please ask the queries if you have. Either you can switch your microphone on or you can type in the chat also. Okay, till the audience asks, like some of the observations which we had observed during our placement, like I would like to tell them. First of all, which I observed during the online assessments, OAs, they were that now companies are not only focusing on DSA. Like 1-2 साल पहले बहुत सुनते होगे कि DSA ही हर कंपनी पूछ रही है, तुम्हें लीड कोड हार्ड का तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा. बट इट वाज अ मेजर सरप्राइज ड्यूरिंग आवर टाइम कि हम मैक्सिमम कंपनीज जो टेस्ट देने जा रहे हैं, दे वर आस्किंग लॉजिकल रीजनिंग और like data interpretation questions, aptitude questions, and they were the software companies only. So we were going with the expectations कि आज DSA का question देना होगा, and then we had all this. So इसका कोई अलग से बहुत special prep नहीं रहता, but it should be that your mind is focused क्योंकि वहाँ पे तुम्हारा दिमाग ही सबसे ज़्यादा चलना है, and you should be able to solve them. So that was one of the major observations because they can also play an important role. Like in some of the companies I got shortlisted, it was based on aptitude and logical reasoning only. So if you have a good hold, because that is the play of time, वहाँ पे जितना जल्दी जितना ज़्यादा सही questions करोगे उतना तुम्हें advantage मिलेगा. So be mentally prepared for that is something I'll advise. I also add a point on the 90 point. So this is a major problem जिसकी वजह से मेरी केवल 5 शॉर्ट लिस्ट आई थी. तो यू गाइस मतलब तुम लोग को बहुत ज्यादा अवेयर होना पड़ेगा मतलब इस चीज के लिए. ये बहुत मेजर पॉइंट है. 90 ने बहुत अच्छी बात बोली है. ये एक बहुत ज्यादा मेजर रीजन है जिसकी वजह से मेरी केवल 5 शॉर्ट लिस्ट आई थी.
rather than being कि मैंने इतनी सारी कोडिंग की, इतने सारे वेब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स बनाए एंड सच काइंड ऑफ थिंग, लेकिन मैंने वहाँ पर लैग किया एंड उसका मुझे लगा कि हाँ वो कमी थी मुझ में, सो तुमको वो मेंशन करनी चाहिए. Also there are some of the questions I would like to take some of the questions. जैसे पहला तो अभिषेक ने पूछा है कि coming to CS fundamentals, I have not done OS, DBMS and system design. How much time we should give it? Also some tips and resources. So Abhishek, talking about system design, थोड़ी देर के लिए उसको साइड में रख देते हैं. Okay, and talking about CS fundamentals, अगर तुमने OS and DBMS नहीं किया है and तुमने oops कर लिया, I guess, as you are not mentioning it, so I am hoping कि तुमने oops कर लिया है. तो यार देखो, DBMS is a thing कि यार जो तुम्हें OA में भी help करेगा, ठीक है. लाइक अभी नब्बे ने बताया कि यार रीजनिंग भी आता है, एमसीक्यूज भी आते हैं. सो एमसीक्यूज में डीबीएमएस की क्वेरीज भी आ जाती हैं, लाइक सिक्वल की क्वेरीज बेसिकली आ जाती हैं, डीबीएमएस के कुछ कुछ क्वेश्चंस भी आ जाते हैं. ऑल्सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरव्यूज, तो इंटरव्यूज में भी डीबीएमएस के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. लाइक इफ यू आर गिविंग मैनेजरल राउंड, देन वो पूछ सकता है कि हाउ शुड यू मैनेज द मेमोरी एंड व्हाट सिनेरियो इज coming into your mind from this chart, and such type of questions वो तुमसे पूछ सकता है. So DBMS is kind of important. Also OS is kind of important. OS तो for interviews, for interview purpose. See, OS के लिए अभी इतना लेट नहीं हुआ है. It's end of the August and तुम्हारे जो interviews start होंगे वो I guess तुम्हारे interviews दिसंबर में ही start होंगे. So you can do OS also, बिकॉज OS थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है यार. बिकॉज अगर तुम्हारी डे 1 डे 2 में शॉर्टलिस्ट आ जाती है, देन दे विल आस्क OS, दे विल आस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. बिकॉज if you are a software engineer and you don't know even a very basic of software engineering, then I don't think so कि उनको at least you are from non circuital or circuital background, I'm not talking about that, but at least थोड़ी बहुत knowledge होनी चाहिए, because OS is basic ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. सो वो तुम्हें आनी चाहिए. सो दोनों कर लो, OS एंड DBMS. सिस्टम डिजाइन को थोड़ा साइड में रख लो. इफ यू हैव टाइम देन तुम एक्सप्लोर कर लो. आई एम नॉट सेइंग कि यार उसको तुम 2 दिन 4 दिन ऐसे दिए जा रहे हो. आई एम नॉट सेइंग दैट. अगर तुम्हारे पास बहुत ज्यादा टाइम बच जा रहा है, लाइक मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम बच गया था, मेरे पास लास्ट तक बहुत ज्यादा टाइम बच गया था, एंड आई वाज नॉट वर्किंग ऑन दिस पार्ट दैट नब्बे मेंशन कि यार रीजनिंग कर लेते हैं, थोड़ा बहुत वो चीजें कर लेते हैं, एंड आई वाज नॉट वो. हालांकि मेरा कटता भी जा रहा था, मेरे टेस्ट के साथ मेरा शॉर्टलिस्ट भी नहीं आ रही थी एंड मेरे पेपर्स भी नहीं अच्छे जा रहे थे, एंड आफ्टर सच कंडीशंस भी मैं रीजनिंग पर फोकस नहीं कर रहा था, एंड आई वाज मच मोर फोकसिंग ऑन सिस्टम डिजाइन कि यार सिस्टम डिजाइन कर लेते हैं. क्योंकि मेरे पास 3-4 बार मैंने लास्ट तक रिवीजन मार लिया था एंड सिस्टम डिजाइन ही बच रहा था, तो मैंने सिस्टम डिजाइन पर भी हाथ पांव मारना शुरू कर दिया था. बट वेरी वेरी बेसिक, लाइक 1-2 दिन दिया था एंड 2-3 वीडियोस दिए थे, एंड आई वाज लाइक यार इसके लिए तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए, थोड़ा बहुत बेसिक्स पढ़ लिया एंड इट्स ओके, ठीक है जाने दो, नहीं होगा देखा जाएगा. एंड आफ्टर दैट Vankatesh. Hello. One भैया advice. एक हाँ क्वेश्चन हाँ, Yeah. also yeah, Can I just add एक to that क्वेश्चन था question? भैया. yeah. No. Yeah. I Actually, like, wanted to ask a follow-up okay, someone is question. asking. That Okay. you told that some companies were asking SQL queries. जैसे AQR कैपिटल पूछती है, स्काईफंड पूछती है, कितनी कंपनीज अप्रॉक्स SQL क्वेरी लिखवाती होगी OA में? Like this totally depends from company to company, and they Yeah, can but switch it's important. their I test think pattern. SQL is important. Yeah, SQL की query, even though DBMS का basics भी आता हो, तो you can write some of the SQL queries. उतना you can, the best resources HackerRank पे practice कर लो. They have a list of questions on different SQL queries. You can practice them out in 2 to 3 days. Because OS में वो तुम्हारा help कर जाता है. Yeah, you can see some fictive some SQL problems in lead code also. We can practice that, like it's classified into hard and all, and it's very good to practice. And SQL queries will help a lot. Like in some companies, they'll be having like 2 DSA questions and 1 SQL questions. So this SQL question writing, it is very easy if you know something, if you know the basics also. So if you are not getting the DSA question also, completing the SQL question will give you some points. And coming to the CS fundamentals, I just needed to add, like, try to do this OS and DBMS now itself. Like, don't put it to the last time, because it might help you in OA assessment also, online assessment also. Like,
many questions are there, like in operating systems, you might be seeing some question like processor scheduling and all. These questions can come in this MCQ section, and it gives you a lot of points that is there. And coming to this, how much time? It depends on you. I would say when you are studying, like you can use resources like YouTube channels are there, then PDFs will be there, but prefer YouTube channels. I prefer YouTube channels. There are like Gate Smashers, Code Help by Baba. All these channels are there. You can use them. And one thing is like whenever you are learning it, learn it properly. Like don't just go it through in a rush way, like using 2x speed and everything is fine. But learn it properly. Make notes. Make good notes of everything. Don't make it rush because it is needed every time. Make notes, revise them properly. The thing is like DSA and everything is fine only. Web development is fine only. If you practice it, you can remember it. But these theory things you won't remember at all. You need to make notes. You need to revise at every time. Before interview also you need to revise. So make good notes. That is one thing. And resources, I think you can find it YouTube. These channels are there. Yeah, Nidhin, you can continue. One point more to add on it, like in case you are not able to prepare for OS DBMS, I'll highly suggest not to mention them in your resumes too. Like only mention that you are proficient in OS DBMS only after you have a decent level of knowledge. Because if you are mentioning that like many people do that in their programming skills or in their tools, they write that they know OS, DBMS, computer subjects. And when the interviewer sees this, they will first throw a question immediately that since you know OS, you can tell about this. So just until unless you have a decent level of knowledge, don't mention them. And if the interviewer asks after that, you can say that you know the basics of it. As you are from non-circuital, so you have a basic level of knowledge on how these things work, and you can tell them. So take care of this thing because whatever you mention in your resume, it will be important to know. Also, this thing is applicable for everything you write in resume. Like whatever things you write in resume, be ready with questions. Like you should make your own question. You should able to answer it. Like if it is something like you have mentioned something like they are asking some DSA question, it is okay to say you don't know. Like in an interview, it's not mandatory. Like you should say every answer. It's okay to say you don't know also. But if it is a question from your resume, you should be able to answer it. That's like at least minimum requirement the interviewer is expecting. So whenever you are making a resume, be ready like to answer everything. So don't make anything that you don't know. Don't write anything. Like think like you need to explain this well. So whenever you are resuming, be careful. Like for example, on this, I can give that if you have made a front-end project and you have mentioned you have used JavaScript, so be prepared that you know at least the basic syntax of JavaScript, you know how the callback functions work and all. These are some of the concepts of JavaScript. If you're mentioning that you have used JavaScript in your project, the interviewer will expect that you know it. So be careful in that part too. Also, like if it is in a React you have written, be ready with hooks. Right. They will really surely you ask hooks questions. Because if it happens to be an unlucky day, the interviewer will be from front end only who is working 5 to 6 years in that field. So they will ask. Exactly. So this thing happens. So overall conclusion is whatever you write in the resume, you should be able to cross questioning those things like why, what, how. अगर ये नहीं किया होता ये किया होता then, and also if you are tackling such type of questions और तुम फंस जाते हो किसी पॉइंट पर, then you should not say कि नहीं सर ऐसा नहीं, you should say कि I think so like in this manner. Also answering जब तुम इन questions को answer कर रहे होगे because जब जो सामने वाला इंटरव्यूअर रहता है he will be seeing कि यार ये एक बंदा बोल क्या रहा है. like मेरी गंदी आदत थी, मेरी आदत क्या थी, for every question I used to say कि कुछ भी ऐसा बड़ा सा बोल देता हूँ and boom. so सामने वाला इंटरव्यूअर क्या करता था, अब भाई चलो मैं तुमने बोल दिया ना सिगमेंट्री, चलो अब सिगमेंट्री पर ही घुस जाते हैं, चलो अब सिगमेंट्री के अब बताओ. I don't know sigmentry. I'm not, interviewer is like I'm not aware about sigmentry. What is sigmentry? Let me know what is sigmentry. So बोलना वही जिसको समझा सको and
easy things बोलना. Interviewer तुमसे कोई भी कठिन चीज नहीं पूछेगा. He will not ask such type of tough questions. थिंक इन ईजियर मैनर. अगर ईजियर मैनर में नहीं सोच पा रहे हो, तुम उसी डायरेक्शन में जा रहे हो, देन यू शुड आस्क. एंड ऑल्सो इफ किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर तुमको लगे कि यार मैं स्टक ही हो गया हूं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, देन यू शुड आस्क फॉर सम हिंट्स. हिंट्स लेने में बिल्कुल निगेटिविटी नहीं है. तुम उसका टाइम वेस्ट मत करना, बिकॉज टाइम इज अलॉटेड. इफ 30 मिनट्स इज गिवन टू यू, इट्स योर 30 मिनट्स. उसका कुछ नहीं जाएगा, सामने वाले बंदे का कुछ नहीं जाएगा. इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट हाउ यू आर मैनेजिंग योर टाइम. सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सर आई एम स्टक एट दिस पॉइंट, आई एम नॉट गेटिंग एनी सोल्यूशन, सो कैन यू गिव सम हिंट्स, बिकॉज इफ यू कैन गिव सम हिंट्स देन आई कैन थिंक further. So you should ask politely. So these kind of things. Also talking about code forces versus lead code, it depends on yourself, how you are confident on code forces and how you are confident on lead code. If you are very much confident on code forces, like you are an stable expert and you are very much confident, like I'm not giving any threshold, like this is a threshold. But if you are very much confident on your coding skills, like some of I have seen many of the specialists also, they are very well, they are very well better than some experts. Okay, they have very great knowledge. So if you are very much confident, then you should switch to lead code. Also, lead code is compulsory. At this time, lead code is very much compulsory. Lead code is must. You should do lead code, because ये time पे lead code must करना चाहिए. And for code forces, I am saying if you are doing it in the past 2 years, then you can give contest. Okay, because code forces से भी direct question OS में आते हैं. Okay, code forces से भी direct questions आते हैं. So talking about code forces versus lead code, ये तुम्हारे कॉन्फिडेंस लेवल पर है कि तुम किस कॉन्फिडेंस लेवल पर हो. लीड कोड के क्वेश्चंस रेयरली रिपीट हो जाते हैं डायरेक्टली, कोड फोर्सेस के थोड़े से कम होते हैं, बट चांसेस हाई रहते हैं. एंड अगर कोड फोर्सेस का अच्छा क्वेश्चन रिपीट होता है एंड यू हैव सीन दैट, देन इट इज सम काइंड ऑफ कि तुमने बहुत कुछ अलग कर दिया, बिकॉज बहुत ज्यादा बंदे इसको नहीं कर पाते हैं. So if you guys wanna add something in this question, code forces versus lead code. Yeah, for me, I prefer lead code mostly because like some small observation what I was seeing is like code forces helps to improve this intuition. Like while seeing a problem, you will be directly able to find some solution. Like you will be getting some intuition while doing problem in code forces. But lead code is purely for practicing DSA. So I would suggest like at this last moment, like you can do contests in code forces, that is a good thing. But for practicing, I would suggest lead code mostly because there everything is like DSA oriented and all. So lead code, I did mostly in DSA, like lead code only. So I would suggest that. And one more point, when you are practicing lead code, don't just go for like you are going to do complete graphs in lead code only. एक महीना पूरा graph पे ही लगा रहे हो या एक महीना पूरा DP पे ही लगा रहे हो. Don't do this thing. Like lead code also go for diverse topics. DP, graph, binary trees, linked list, binary search. Study all topics because common observation जो DSA rounds में रहता है for companies that they usually ask one question from DP or graph, a medium to tough question, and one other question from other topics. And what I've seen is many people struggle on the second one. That is either DP or graph वाले questions तो कर ले रहे हैं, but जो second question which can fetch equal points, they are struggling in that. When it was just a simple question on binary search. So yeah, just practice out all topics. और वो बहुत simple question होता है. Yeah. And one like thing is like, yeah. Okay, continue. That's okay. No, continue. Okay, I was just saying like mostly when we are doing problems in lead code and all, one problem we are facing is like finding a question. We will get confused which question to take at a time. So I would suggest follow a sheet where problem sheet is there, like many problem sheets are there. So you can follow one of them. So you won't get confused right between. Carry on. Okay, just I was saying that the common trend for most of the companies will be they will be asking one medium to hard question and the other questions will be easy to medium only. So don't, if you are supposed to get a hard question and you are not able to solve it, leave it for some time and focus on completing the easier questions, because after
in the end you will see कि वो easier questions के ज़्यादा points बन जा रहे थे, which you were able to solve. Like one thing I observed in one of the tests was there was an easier question, I ignored it, and when the last 10 minutes were left, I saw that it was just a very simple topic, which could have been done. So avoid such mistakes. Learn which question to solve and how much time to devote. That is also one thing you learn while solving on lead code. Time management is very important while you are doing OA also, and while you are sitting for interviews also. Time management is the first thing you should focus on. So going One to the more second thing, question. yeah. Okay. Just one last thing. While solving questions, make a habit of noting down how you are solving it. Like drive run कर रहे हो किसी example पर कोई भी code लिख रहे हो उसको कैसे dry run हो रहा है. Make a habit of doing it because it will help you in interviews. The interviewer will expect you to show how you are approaching a solution. So make a habit of writing also the solutions, the dry run and your thinking. Yeah, that's all. So going to the next question, Varun asked that I haven't done development till now. What should I do? Varun, if you are adding any project, I hope you are adding some projects in the resume. You have added. Also, I guess resume तो तुम लोग का बन गया होगा या नहीं बना होगा इस टाइम तक. Right, बन गया So होगा. I hope so कि तुम्हारे resume बन गए होंगे and तुमने कुछ ना कुछ projects तो डाले होंगे वरुण. So you should be focus on those things. क्योंकि resume में जो भी projects ऐड किए हैं basically most important thing projects and CS fundamentals जो भी तुमने ऐड किए हैं, क्योंकि जो टेक्निकल राउंड्स होते हैं जिनमें प्योर डीएस से पूछा जाता है वो तो तुम क्लियर कर लोगे, एंड आफ्टर दैट जो मैनेजरल राउंड्स होते हैं या फिर जिनमें आपका डिस्कशन होता है, एंड प्रोजेक्ट का डिस्कशन इज मस्ट. अगर आप इंटरव्यूज दे रहे हो और आप प्रोजेक्ट के डिस्कशन से बच जा रहे हो, इट्स योर मतलब आई एम नॉट सेइंग कि पूछेगा ही पूछेगा, बट देयर इज अ 70 to 80% चांसेस कि वो प्रोजेक्ट पर डिस्कशन करेगा जरूर. So you should be aware about what you are doing as a project. Like अगर तुमने वेब डेवलपमेंट किया है, ऐड किया है प्रोजेक्ट में, then you should go for it. अगर तुमने ML या AI के प्रोजेक्ट्स किए हैं, then you should go for that. So I'm not saying कि तुम वेब डेवलपमेंट ही करो या फिर ML AI ही करो. ML AI is far better thing. So do the thing you are much confident on. So जिस पे confident हो वही करो. So you should focus on development, basically projects. One thing is like adding a project is not at all necessary. Like you can, if you have, you can add it. But the thing is like it's a bonus. If you have a project, and when the interview, mostly every interview will start like introduce yourself. And in the introduction, you can say about your project. Like if it is one, you can say it in a detail. So you should be saying it in a way like it should be a project which should impress the interviewer. If it is like that, you can drive the interviewer. Like you can drive the interviewer in the way you need. So if it is like that, you can avoid many hard DSA questions. Like if you are driving, like they will be having a fixed time, 30 minutes and 45 minutes. Like if you are capable of doing a good project or a good internship, and you are driving the interview, and you are like interviewer is impressed by your project, and they are asking question from that, and they will be having a very less time to ask about DSA questions. So mostly they will be asking easy DSA questions for you. Sometimes like for me, mostly what happened is like my interview will be considered like including only project questions, not at all DSA or anything. Even in my placement for my interview, it was completely project based, nothing at all DSA and all. So if you're doing a project or internship, it helps you in like that way. So it depends upon you. If you're doing a project, then it's good. Yeah. Also, there is one hack which you can try. Like it helped me in many companies, that whenever you are telling about your project, be it your internship project or even a small project you have mentioned, make a story around that. Exactly. Like how you approached the problem, how you solved it. For instance, the company I got placed in, I narrated a complete story on my internship project, that we as a team approached on this problem, we did this, we did that, and I took my full 10 to 15 minutes to explain it, even explaining what the problems I faced, what were the like the outputs which a particular code was giving, how we tackled it, how it, and numbers are important in this, that it helped. Like I made 8 automation suits and all. Because what happens is when you tell a story like this for 10 to 15 minutes, the interviewer gets to think that, yeah, this person has joined the project. They have invested their time and resources in it. So they must be knowing how to do. So for any project which you do, have a story on it.
like what all tech stack you used, how you improved it, and even the smallest problems which you faced in the project, उनको भी mention कर दो. So it will help you in getting saved from much technical questions at times, not in every case, but at times it will help you getting saved from the difficult tech questions, because interviewer gets the thinking, yeah, इसने पढ़ा होगा, इसने किया होगा. Let's move on. So we have a story for every project which you have mentioned. Yeah. One general advice is like in an interview, be confident. That's the most important thing in an interview. Like don't get panicked, and for like a quick way to do that is like just imagine it like a interaction with a friend or someone, and you are just explaining something to them. They are telling you something back. Just take it like that, not like an interview or something. Because if you are not at all confident, whatever things you have done, they won't believe it. So if you have done basic project only, basic DSA only, and you are saying it in a confident way, it impresses them. So say it in a confident way. Be confident during interviews. Or just like have practice with your friends only. Like tell your project to your friends how you did it, because friends will help you a lot in this. वो तुम्हारी गलतियां बताएंगे, वो और क्वेश्चंस ले आएंगे जो शायद तुम्हारे टॉपिक से भी ना हो, but you will get, after listening to your project, they will also help you in analyzing where you were going wrong and how you can improve it. So have practice with your friends also. So yeah, confidence is a key point. Confidence मुझे बहुत अच्छा लगा. Confidence वाला point भैया का काफी अच्छा लगा. मतलब confidence बहुत ज़्यादा important होता है. In fact जैसा कि मैंने mention किया, I didn't on the basis of my confidence. मैंने projects पर focus किया था. Am I audible ना? Yeah, you are. You're good. सो कॉन्फिडेंस के ही बेसिस पर मतलब जो भी हुआ प्लेसमेंट्स लगी. सो मतलब ऐसा था, मैंने तो प्रोजेक्ट्स ही मतलब आई वाज नॉट लाइक कि मैंने इंटर्न ही नहीं करी थी, मैंने इंटर्न करी थी. एंड बट दैट वाज नॉट, मैं ये नहीं बोलूँगा कि इट्स लाइक अ इंटर्न. इट वाज लाइक कि मैंने अपने दोस्त की हेल्प करी थी. सो और उससे मेरी हेल्प हुई थी सीखने में. So that was not an intern. So going to the second question, Sameer asked that what advanced topics to focus on for OS, and what to prepare for interviews, and where to practice aptitude from. Aptitude के लिए भाई तो 90 बताएंगे and भैया बताएंगे. I'm not going on that question because aptitude I also don't know. Aptitude I also haven't done anything. Aptitude, like we are the first people to see that. Right. When we got aptitude, we were even surprised कि we used to have discussions outside the examination room कि SDE पूछे aptitude. The basic thing is have a sound mind, because वहाँ पे अगर confusion होगा then question गलत होगा. If you are having a sound mind, confident हो, थोड़ा सा ध्यान देकर questions करो, हो जाएंगे. Apart from that, the best people to advise you for that aptitude will be your DADS friends who are preparing for all this, because they practice aptitude a lot. So you can consult them and just don't keep any confusions कि जा रहे हैं अचानक से aptitude का question and you are surprised. वो मत होना, वो बहुत चीजें खराब करता है. Also I want to add some points कि यार aptitude के लिए basically ये कर सकते हो कि अच्छी सी नींद लो, ठीक है. It was like कि तुम लोग को joke लगेगा. No, it's a serious thing. Right. Because तुम्हारा mindset उस हिसाब से prepared नहीं रहता है, because you all are IIT and you all have such a great mind. सभी का mind उसी level का होता है. एंड बस द पॉइंट इज कि तुम लोग पैनिक हो जाते हो एट दैट पॉइंट. तुम लोग नींद नहीं ले रहे हो प्रॉपर. एज लाइक तुम्हारा सुबह 6 बजे पेपर है एंड तुम रात को 2 बजे सो रहे हो. तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम्हारा 4 घंटे की नींद लेके 3 घंटे की नींद लेके एंड वो स्ट्रेस लेके तुम उससे बेटर परफॉर्म कर पाओगे. बिकॉज जो प्रॉपर एसडी के बंदे हैं वो एसडी में ही रह जाते हैं, because they have many of such kind of things like DSA करते रह जाते हैं, CP करते रह जाते हैं, CS फंडामेंटल्स हैं, वेब डेवलपमेंट है, AI ML है, एंड कुछ HR क्वेश्चंस हैं, एंड कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है कि इंटरव्यूज दे रहे हैं दोस्तों के बीच में. तो दे डोंट हैव दैट मच टाइम कि वो रीजनिंग के लिए अलग से टाइम निकाल के भाई ये सब कर सकें. जस्ट द पॉइंट इज कि योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, तुम नींद प्रॉपर लो, अच्छे से अपना टाइम शेड्यूल, टाइम मैनेजमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट.
आराम से अच्छे से, और पैनिक नहीं होना है किसी भी कंडीशन में। सो एप्टीट्यूड के लिए तो वही बोलूँगा। एंड फॉर उसके लिए अभी लास्ट में आ जाते हैं, एडवांस टॉपिक की बात कर लेते हैं। सो एडवांस टॉपिक्स के लिए तो यार बेसिकली मैं बोलूँगा कि यार सी डिपेंड्स ऑन कंपनी। जैसा कि अभी नब्बे ने ही बोला कि यार one question from medium to hard and one question from medium and one question from easy to medium, ऐसा जनरल सा टास्क रहता है, टारगेट रहता है कंपनीज का। ऐसा बहुत ज़्यादा हेक्टिक टारगेट नहीं रहता है। सो ट्राई करो, जो इजी टू मीडियम वाले हैं वो तो तुम्हारे बेसिकली ऑलमोस्ट सभी कर लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा इजी होते हैं। एंड जो मीडियम वाले रहते हैं वो बेसिकली इधर इसके अराउंड बाइनरी सर्च एंड सम ग्रीडी अप्रोच एंड सम स्मॉल डीपी काइंड ऑफ थिंग, ठीक है, उस टाइप में ही निकल जाता है। एंड जो थोड़ा सा हार्डर वे में जाते हैं वो कभी वो 2-3 वैरायटी में आ जाते हैं। इट्स लाइक कि बहुत ज़्यादा एडवांस टॉपिक से बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया। इट्स लाइक कि सिगमेंट्री का कोई क्वेश्चन उठाया एंड सिगमेंट्री का बस कोड लिखवा लिया। एंड ये थोड़ा सा आई एम नॉट फोकसिंग ऑन सिगमेंट्री, ध्यान देना। आई एम जस्ट टेकिंग कि एडवांस टॉपिक का कोई भी टॉपिक उठा लिया एंड उसका बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ पूछ लिया। या फिर सेकेंड पार्ट इज कि डीपी उठाया या ग्राफ उठाया या ये चीजें उठाई एंड उसका बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछ लिया। easy topics उठाए, easy I'm not saying easy because I'm not very much confident on these topics, I'm not saying easy, but the point is कि ये जो जनरल टॉपिक्स होते हैं लाइक डीपी ग्राफ्स एंड ट्रीज एंड ये सारे जो टॉपिक्स होते हैं इनका कोई भी टॉपिक उठाया एंड उसका थोड़ा सा टफर साइड का क्वेश्चन पूछ लिया। अदरवाइज द थर्ड वेराइटी इज कि कोई भी ग्रीडी का क्वेश्चन उठाया एंड दो ऐसे टॉपिक्स को मर्ज किया लाइक बाइनरी सर्च प्लस समवॉट स्मॉल डीपी, बहुत छोटी सी डीपी जो तुमको लगेगा कि यार ये तो ग्रीडी से हो जाएगा एंड वो उस जगह पर गलत हो जाता है। जस्ट लाइक बाइनरी सर्च प्लस स्मॉल डीपी, ये दो बहुत ज्यादा जनरल चीजों को मिला के ऐसा क्वेश्चन बना दिया जाता है। या फिर सिंपल ग्रीडी जिसमें तुम्हें ग्रीडी ही जाना है और तुम आधे घंटे के लिए सोचते रह जाओगे यार ग्रीडी काम करेगी नहीं करेगी, तो वो वाले क्वेश्चंस भी होते हैं। तो दीज 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो एडवांस क्वेश्चंस में आएंगे, तो थोड़ा बहुत टॉपिक्स का फोकस रखना। लाइक बाइनरी लिफ्टिंग हो गई, ठीक है, अपने टाइम पे बाइनरी लिफ्टिंग भी थोड़ा सा फेमस हुई थी। बाइनरी लिफ्टिंग हो गई ट्रीज में, और थोड़ा ट्रीज पर फोकस करना, ग्राफ्स पर फोकस करना, डायस्ट्रा पर फोकस करना। थोड़ा सा अगर लास्ट में टाइम मिलता है देन यू शुड गो ऑन सम रेंज क्वेरीज लाइक सिगमेंट्री, या फिर जो बहुत अच्छा कर चुके हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ रेंज क्वेरीज पर तब स्विच करना। इट्स नॉट कंपलसरी बिकॉज मैक्स टू मैक्स 1-2 कंपनीज ही पूछेंगे, उससे ज्यादा पूछेंगे भी नहीं सिगमेंट्री। सो डोंट गो फॉर इट अगर तुम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो। एंड टॉकिंग अबाउट इंटरव्यूज तो भाई बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं, प्रेटी सिंपल। मतलब इंटरव्यूज में भी यार द टोटल थिंग इज टाइम मैनेजमेंट, द टाइम मैनेजमेंट, बिकॉज यू हैव 30 मिनट्स ओनली। उन 30 मिनट्स में अगर इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछता है देन इन इंटरव्यूज फर्स्ट ऑफ ऑल cross check that if you confirm your question, basically cross check that you are understanding the right question। काफी लोग इस जगह पर अटक जाते हैं कि यार क्वेश्चन ही गलत समझ लिया एंड बहुत लास्ट में उनको पता चलता है कि यार ये क्वेश्चन ही तो अरे मैंने तो ये सोच लिया था। देन ये सामने इंटरव्यूअर की गलती नहीं है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रॉस चेक द क्वेश्चन। द सेकेंड थिंग इज जो भी क्वेश्चन होगा उसका बहुत सिंपल अप्रोच होगा, कभी भी टफर साइड में मत जाना, बहुत सिंपल अप्रोच होगा। वो उसी हिसाब से लाइक बाइनरी सर्च के अराउंड घूम रहा होगा, बहुत बेसिक डीपी के अराउंड घूम रहा होगा, या फिर ग्रीडी के अराउंड घूम रहा होगा, या फिर ये जो प्रायोरिटी क्यूज एरे स्टैक लिंक लिस्ट इनके अबाउट घूम रहा होगा, मैप्स इनके अबाउट घूम रहा होगा, या फिर बेसिक ग्रीडी के अबाउट घूम रहा होगा, या फिर जो फेमस क्वेश्चंस होते हैं ना सीट्स के उनके अबाउट घूम रहा होगा। इंटरव्यूज आर नॉट दैट मच टफ। सो और फिक्स पैटर्न्स भी रहता है कंपनीज का। जिन भी कंपनीज का इंटरव्यू देने जा रहे हो ट्राई करो कि एटलीस्ट पास्ट एक्सपीरियंसेस पढ़ के जाओ, जरूर से जरूर पढ़ के जाओ, इट इज मस्ट, बिकॉज उसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। मैं मीशो की बात करूं देन आई एम इन द टीम रिक्रूटिंग टीम। सो आई एम मैं देख रहा हूं कि यार इंटरव्यूज जो हैं वो पास्ट ईयर के इंटरव्यूज के तरीके से ही हो रहे हैं। जस्ट द थिंग इज कि क्वेश्चन डिफरेंट है, तो सामने वाले बंदे को कैचअप करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके दिमाग में बैठा हुआ है कि हाँ यार थोड़ा सा LLD टाइप सा है, थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके लिखना है, बट द थिंग इज क्वेश्चन डिफरेंट है, तो मैं उस डायरेक्शन में सोचने लग जाऊंगा। सो दैट्स माय पॉइंट। सो नब्बे एंड सुजीत। To add on one thing for advanced topics, कि advanced topics पे तभी जाओ when you are confident कि हाँ तुम्हारे बाकी topics cover हो चुके हैं।
It's not like तुम्हें DP graph ही नहीं आ रहा and you are going for more advanced topics. So cover your basic topics like DP graph, ये सब cover करके ही जाना आगे. Because पता चला ज़्यादा जोश में segmentary वगैरह पे चले गए and company DP graph ही पूछ रही है अभी भी. Because these hard questions come for usually 2 to 3 companies only. Yeah. And 50 टेस्ट तुम लोग दे रहे होगे. तो पहले अपने बेसिक सारे कवर कर लो अच्छे से and then go for more. Second thing, it's again a trick for OAs that try to get your at least अगर कोई क्वेश्चन पूरा नहीं हो रहा try to get even the partial test cases कि at least 12 टेस्ट केसेस 7-8 तो कर ही लो because क्योंकि तुम्हारा उससे भी तुम्हें एक एज मिल जाती है कुछ लोगों पे. The like clear tax में for one question it was a variation of increasing subsequences DP का plus one more topic. So वो दूसरा बहुत confusing language में question में ही दिया था and I was not able to implement using that logic. So increasing subsequences का ही logic लगा के किया and there were 8 test cases which ran correctly. वो 4 कुछ और logic extract कर रहे थे. So didn't wasted much time on it and बाकी questions पे कर लिए. And still I got shortlisted for the company on that. One full question and one partial test cases. So partial test cases cover करने का हर question में try करना. Suppose अगर कोई question सिर्फ true या false ही return करने को कह रहा है and हो जा अगर तुमसे वो question नहीं बन रहा सीधे return true ही कर दो. तुम्हारे कुछ test cases तो उसमें cover हो जाएंगे. तो try कि at least my partial test cases, if you are not able to solve, then वो cover हो जाए because it will also fetch you some points in that. Yeah, I would like Apart to from add that- in this resume and little bit of interview section. Like in resume, as we said, like for each things you write in the resume, prepare notes. Like as Nave said, make story of everything, prepare a good story. Then like something found in every interview is like what do you write in project or internship? There are certain type of interview questions are there, like challenges faced, how you solved it, then what type of tech stack you use, some sort of common questions are there. So for each project, you can make a file or something where you can write all these questions you can get in and write answer by yourself. So you are having the question, you are preparing for that. That is one thing. So these things you can write. Then one thing is like if you're getting shortlisted for a company, like you might be getting shortlisted for 4 or 5 companies. What you can do is like prepare a background of each company before the interview. Like check about their LinkedIn page or what all products they have, what all their competitors are, then which field they are working. Prepare well about each and every company before the interview because when you are going for an interview and when the interviewer asking you something, they will be finally asking like, do you have any questions? So you cannot say like, I don't have any questions. It's over. Bye. You can say like that. You need to ask some questions. So for that, prepare well about the company, if possible. In some companies, like I was able to do that, but it's not every time possible. Like if possible, research about the interviewer also. If you are getting a team lingo something yesterday, check about the interviewer in their LinkedIn and all, how they have done something, in which company they have worked, all these things. Check be confident about their background also. If you are doing that, then you can ask these questions, cover up some time, and impress them. Interview have a lot of hacks. Yeah, Srijidu said correctly. Like you should be able to engage in a long conversation. कि फिर interview को भी ना हो जल्दी to end the interview. Like when I was giving the interview for one company, I had just read their PPT. I just read the job description which they provided to TPC. There was no PPT for that company. And I just went on discussing how the company is doing, what are its potential competitors, what am I supposed to do when I join the company, what are software engineers, on what challenges they are working on, how they survived during COVID time. You can go on discussions like these. Also, some questions are subjective to the company. Like some companies can ask, do you prefer a startup or an MNC? So prepare your answer accordingly to the company you are giving. If you're giving for a startup, just say that startups are the best and I want to go for a startup. If you're going for MNC, just say MNC is the best. So you have to lie at some points. You have to lie at some points as per the interest of the company. Not in the resume part, but on these parts you can lie. But if you are having a strong interest, explain it well.
Like if Yeah. your company is asking, like you might be selected for backend, but you are interested in front end, you should be able to explain it well to them, like you are interested in front end. Some companies will be thinking like if the candidate is more flexible to take any role, that is also best. Or if you are interested in a role in such a way that you are able to explain it to them, like why you are interested, so they will also be interested to take you into that role itself. So that is also good. One more thing to take an interview, the interviewer might ask in on-campus interviews, interviewer might ask in which other companies you are shortlisted correctly and you are giving interview. Don't say the truth. One of my friends said, and he was shifted from shortlist to waitlist. Ultimately, he got back into shortlist. But don't say the truth. Just say that the TPC rules don't allow us here. Because some companies will go on asking that are you shortlisted in other companies or not. Just say that TPC rules don't allow us to tell you. Okay, so can we go to next question? Yeah. So नेक्स्ट क्वेश्चन अभिषेक ने पूछा है अबाउट द क्वेश्चंस। यार ये क्वेश्चंस तो यहाँ पर रिकॉल करना थोड़ा सा टफ रहेगा। हम लोग तुमको कुछ क्वेश्चंस जो मेरे पास हैं मैं तुमको दे दूंगा। ऑल्सो आई गेस नब्बे इसको डिस्कस करना तो आई गेस मतलब क्वेश्चंस रिकॉल करना है। The thing is like once you go through the test series, you will forget everything. You don't know which companies you gave test to, which call questions are there. You will forget completely. It's like a daily process. Because if you there will be like 4 tests in one day. Yeah, if you go to TPC portal, then I guess there is some experience kind of thing, like past year experiences from the seniors. So उन्होंने बहुत अच्छे से लिख रखा है, तो उससे भी go through कर सकते हो. And I also have some collections of questions जो मैंने अपने टाइम पे collect किए थे. Like those were not from my test actually, but they were from my minus one actually, my seniors questions. So मैं उनको provide कर सकता हूँ. And talking about Misho, I don't think कि मीशो इस बार IIT BHU जाएगी because I don't think so. I'm not very much confident about it, but I don't think so as अभी तक का जो भी चल रहा है उसके हिसाब से. So going to the next question. Yeah, Nitin, just one thing. For questions like some NITs and triple ITs and other government colleges, they also will be giving their test plus interviews right now only in these times. So if you are having your friends and connections in these colleges, you can contact them. They might have given the interviews by now or by the time you are going to give. So you can always find your connections in those places. Yeah, there will be WhatsApp channels, like WhatsApp groups will be there. Right. Yeah, Discord channels will be there. Discord. So you can join them. For examples of companies which have aptitude-based OAs, like I said, it depends on company to company completely. Some companies like just shifted their pattern to give more of aptitude. You might feel that the company which was not asking aptitude last year have included some. So it totally depends on the company. Also, I can count some of the companies जिन्होंने अपने OAs में aptitude नहीं पूछे थे, because I was mostly shortlisted on these companies only. So पहली थी ThoughtSpot, and the second was Sprinkler, Media.net, Misho, Google, Microsoft, and some of these kind of companies didn't ask aptitude in their OAs, but this year they can ask, and then might not ask. It depends on their company, their recruitment process. So we can't judge according to them. So Abhishek again asked, is OS important for OA test or interviews only? मतलब OA और इंटरव्यू ही तो देना है भाई, मतलब ओनली का मतलब सेंस नहीं समझ में आया, बाकी वो सब तो छोड़ो. मैं OS की इंपॉर्टेंस बता दे रहा हूँ. OS इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर इंटरव्यूज. इफ यू आर गेटिंग इनटू इंटरव्यूज, OS अगर आपने खासकर इफ आपने मेंशन किया है तो if you have mentioned in resume, that point is very very much important, because you don't know कि जो सामने वाला बंदा है, आपने OS mention कर दिया and मैं OS का expert हूँ, I will start asking question, I will start discussion for the 30 minutes on OS and you are not aware about OS. So if you are mentioning that point, you should be very much confident on it. You should be very much confident. First questions कर सकता हूँ. Yeah. And one for thing online assessment, okay. Yeah. Okay. I was just saying that for online assessments, you will get questions from OS, computer networks, OOPs, mostly in form of MCQs only. So
So I was saying like currently we are thinking about OS, DBMS and OOPS only, but there is networking also. I would say it's not that much important, but there are some companies like Cisco, Palo Alto, these companies are there. If they are coming and you're shortlisted for those companies, prepare network well. They will ask network questions purely. Yeah. So and that is there. Then one thing is there, a low level system design. Like you don't need to prepare high level system design, but nowadays there is a trend like some companies are asking low level system design. So if you're worried about that, it is not Even so much high. Like it's similar to OOPS only, but you are implementing it in practical case. So it is interesting if you are preparing. Like don't take it serious and practice it before OS or DMS. You can do it at the last. They won't be asking it the OS sections, mostly in interviews only. Like one more thing even for OOPS. Yeah. I was just saying that OOPS also covered the basics of programming languages. Like if you are going for C or C++, you should be knowing what are garbage functions, what are pointers, what are different variables and different types of inheritances, because these questions are also asked, like Jaguar Land Rover asks many questions from the C++ language, programming languaging basics. So they ask much questions on that part. So be prepared for them too. And many companies in their MCQ part will prefer questions from this only. What will be the output of this particular code? What is a garbage function? And they will give 4 completely different statements. You have to tell which one matches the best with the description. What is a pointer? And they will again tell you 4 scenarios. So you should be knowing such things also. And if you are mentioning other programming languages in your resume, have at least a basic knowledge on their syntax. Many people go on mentioning Python, Ruby, Go, and when asked just to print a simple hello world, they are confused in that. So don't go do that. Yeah, Nitin, you can also so मैं वही बोल रहा था कि OS एंड DBMS आर इम्पोर्टेंट, ठीक है। और मतलब ये सारी चीज़ें तो हैं, मेंशन मत करना कोई भी ऐसी चीज़ जिस पर तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो। And the second question was how deep do they go with OS and DBMS in interviews? They don't go that much deep. वो आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि आप पूरा का पूरा एक सिस्टम बना के रख दो। They are not expecting that thing. They are expecting that they are judging कि आपने ये मेंशन किया है, you know about it or not. अगर आपने मेंशन किया है OS and you didn't heard about deadlock, then आपने OS मेंशन क्यों किया है? You didn't even heard about memory management और तुम memory management पर कुछ भी डिस्कशन नहीं कर पा रहे हो। भाई तुमने OS मेंशन क्यों किया है? OS is all about some kind of deadlocks, memory managements and how process management is being done. So these kind of things, दो ही तीन चीजें हैं, these are the basics. तो basics तो आपको आना चाहिए। And talking about DBMS, if you are not aware about कि यार डेटाबेसेस में मतलब थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं लाइक क्लस्टरिंग से बेसिक, बिकॉज इफ यू आर गिविंग मैनेजरल राउंड दे विल डायरेक्टली दे डोंट डायरेक्टली आस्क कि यार क्लस्टरिंग बता दो मुझको, तो डेफिनेशन बता दो क्लस्टरिंग की। दे विल आस्क कि यार लेट अस सपोज आई हैव अ सिस्टम and I want to divide them with the 2 servers, then in this scenario what would you do? What are you thinking कि क्या होने वाला है? What should I do? तो तुम बताओगे कि I am thinking towards this direction. I am not expert in DBMS. I didn't made any system. I didn't work in any hardware company. But I am thinking that this might happen. This thing should happen, and this is the thing that I should do. गलत है, सही है, थोड़ा सा मतलब अब ये मत बता देना कि भाई मैं ईस्ट पूछ रहा हूं तो तुम सीधा वेस्ट ही बता दे रहे हो। इट्स नॉट लाइक दैट। इफ आई एम आस्किंग अबाउट ईस्ट देन यू शुड ट्राई कि मैं ईस्ट के साइड ही जाऊं। आई एम नॉट सेइंग कि ईस्ट ही जाओ, बट ठीक है थोड़ा बहुत इधर उधर भी चलेगा। दे डिडंट एक्सपेक्ट कि तुम एकदम 100% करेक्ट आंसर बताओगे, बट दे आर एक्सपेक्टिंग कि यार बंदे का जो दिमाग है, जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, इसने थोड़ा सा तो कुछ सोचा है, कुछ यूनिक सोचा है। इवन तुम गलत हो फिर भी ठीक है, मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मैं कुछ कर ले जाऊंगा मैं इसको। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर। सो एटलीस्ट जो चीजें जो जैसा कि अभी सिजीत ने बताया कि 2-3 चैनल्स बताए कि कुछ चैनल्स बताए थे उन्होंने, तो वो जो चैनल्स मेंशन किए थे उनमें आई गेस कोड स्मैशर एंड वो लबब्बर का just type it in the कोड हेल्प
कोड हेल्प वाली चीजें, ये दोनों में आई गेस मैंने कोड हेल्प से किया था लब बब्बर से, एंड मैंने उनको 3-4 बार लास्ट तक रिवाइज कर लिया था। तो आई वाज वेरी वेरी प्रेटी मच कॉन्फिडेंट अबाउट सीएस फंडामेंटल्स। इवन मेरे कुछ लोगों से तो बहुत लंबे डिस्कशंस चल जाते थे एंड डीप डिस्कशंस चल जाते थे। तो सो यू शुड आल्सो डिस्कस विद योर फ्रेंड्स आल्सो कि यार कि यार ये चीज है तो ये कैसे होगा, बिकॉज तुम्हारे दोस्त ने कोड स्मैशर से पढ़ा है, तुमने लब बब्बर से पढ़ा है, देन यू शुड डिबेट। मतलब काइंड ऑफ डिबेट का मतलब ये नहीं है कि यू शुड स्टार्ट फाइटिंग कि नहीं यार ये नहीं ये सही है। यू शुड कि यार तुम्हें ये आता है तो तुम ये बताओ, तुम्हें बी आता है तो तुम बी बताओ, दैट्स काइंड ऑफ थिंग, दैट्स माय पॉइंट। So you should start discussions also, and you should be much confident before your interviews. So that's my point. Okay. Next question was minimum projects in resume. I can say 1 internship plus 2 to 3 projects work well for every company. Don't go beyond 4, that is combined 1 plus 3 in any case. 2 internship 2 project रख लो, कहीं पे भी 4 से आगे मत जाना. And also whenever you are mentioning the field of your projects, don't go beyond 2 fields. Like AI का एक डाल दिया, एक ML का डाल दिया, एक वो सॉफ्टवेयर, एक फ्रंट एंड का डाल दिया, एक बैक एंड का डाल दिया, एक फुल स्टैक ही डाल दिया. Don't go on such diverse topics. Just go to a maximum of 2 topics where you are making projects. And maximum 4 projects will work. चार प्रोजेक्ट्स में तो एक पेज आ जाएगा पूरा. Right. Because I have seen people mentioning 5 to 6. It should be that like you fold your resume. Yeah, if you are folding your resume in half, your first half and a little more than that should be with projects, not more than that. And for every project you can mention 2 to 3 points on how it worked and the numbers on what you tackled. And bold, so that will important point. Yeah. So I guess second question was like from where do you practice OOPS OS, जो कि MCQs में पूछे जाते हैं. So as like OOPS के तो questions यार ये तुम लोग tackle कर लो. OOPS का, I think OOPS, there are a lot of platforms for OOPS. I don't remember at all, like there are a lot of videos for OOPS. And OS and DBMS, I think I have shared it in the chat itself. Code Help by Bubba and Gate Smasher, they are the best channel. You can follow them. And in Code Help also, they are providing some PDFs along with every video. So you can revise them. But I don't recommend using that PDF because like they are like noting down single points only, not an explanation. So if you are just studying it or revising it using that PDF, you won't be getting everything. So I would recommend make your own notes after watching the video. Make everything, whatever you understood from a video, just write it in your own words. Then you will be able to revise it easily. Otherwise, it also takes some time. And I don't think there are many websites which have full MCQs dedicated to it. It's just that you study the topics and they will ask questions from those topics only. So yeah. Just study the topics well. It will help you in OAs as well as in interviews. So the second question from Dhruv was, should we continue graph DP from lead code or start practicing medium hard greedy from CF? Guys, see, CF is just a kind of thing. अगर तुमने अभी तक start नहीं किया है, so please don't start. तुमसे होंगे नहीं questions. Also तुम्हारा confidence एकदम down पे चला जाएगा. I am highly recommending, अगर तुम बहुत अच्छे हो code forces पर, then only you should carry on with only the contest. I am again saying contest, not practicing on it कि भाई तुम दिन भर लगे हुए हो code forces पर. It's not the time for code forces. Code forces का time चला गया भाई. अब तुम अपने companies को देखो, companies को focus करो. Yeah, I am saying कि यार CF के जो greedy वाला section होता है ना, उसमें अगर तुम B या C वाले sections पर जाओगे, like अगर तुम DIP2 के contest दे रहे हो and you are talking about B and C, then yeah, you should practice them because उनकी जो greedy की approach होती है या फिर binary search की या फिर जो ये basics वाले topics होते हैं, वो बहुत अच्छे से crystal clear हो जाएगा. But अगर तुम अब start करने जा रहे हो या फिर इस
साल के स्टार्ट में करने जा रहे हो, आई मीन कि यू आर नॉट वेरी मच कॉन्फिडेंट ऑन दिस काइंड ऑफ थिंग्स, देन आई डोंट थिंक यार तुम अपना टाइम वेस्ट करोगे कोड कोर्सेज पे। ऑल्सो यू फील डीमोटिवेटेड बिकॉज तुम अपने आसपास दोस्तों को देखोगे कि भाई इसकी 1800 रेटिंग है, मैं इसके सामने क्या ही टिक पाऊंगा। भाई प्लेसमेंट इज नॉट दैट काइंड ऑफ थिंग। मैंने देखा है, मेरे काफी सारे दोस्त हैं जो कि 1900 2000 रेटिंग के हैं, एंड सम ऑफ माय फ्रेंड्स जो कि थोड़ा सा इट्स लाइक कोड फोर्सेस उन्होंने कम किया है बट दे आर परफॉर्मिंग बेटर इन प्लेसमेंट्स। सो दैट्स नॉट काइंड ऑफ थिंग। कोड फोर्सेस गिव्स यू कॉन्फिडेंस, also code forces gives you a better approach that how you go for the solutions for this question। इस क्वेश्चन के लिए सोल्यूशन की अप्रोच कैसे लोगे, डायरेक्शन कैसे लोगे, और क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज्यादा इजी बना देता है बिकॉज उनके जो क्वेश्चंस रहते हैं ना वो इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स रहते हैं। बिकॉज आई रिमेम्बर कि जब मैंने कोड फोर्सेस स्टार्ट किया था 1 महीने तक मुझको क्वेश्चंस ही नहीं समझ में आते थे भाई। लिटरली मुझको 1 महीने लग गए कि यार भाई मैं एक क्वेश्चन को एटलीस्ट समझ पाऊं कि यार ये लिखा क्या है भाई, मैं एटलीस्ट समझ तो पाऊं उसमें। LIC is saying something, Bob is saying something, and सच 10 लाइन की स्टोरी लिख दी एंड उसी स्टोरी में वो क्वेश्चन भी बना दे रहा है। सो इट्स नॉट अ टाइम फॉर दिस यार, इट्स टाइम कि यार तुम डायरेक्टली डीएस से फोकस करो। ऑल्सो अगर कोड फोर्सेस पर कॉन्टेस्ट देते आ रहे हो पास्ट टाइम से, देन यू शुड गो ऑन विद द कॉन्टेस्ट एंड ऑल्सो सी तक एटलीस्ट प्रैक्टिस कर लेना। ये उन्हीं के लिए है जिन्होंने अभी तक कोड फोर्सेस कर रखा था। ऑल्सो लीड कोड इज मस्ट। अब तो लीड कोड मस्ट है, लीड कोड पर स्विच कर जाओ सारे के सारे एंड प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो लीड कोड से। दैट इज माय सजेशन। Same suggestion. Just that complete your DSA first. That should be your main focus. After that, if you have time and if you have been practicing, as said anything, ऐसा नहीं कि एकदम आज एक नया टॉपिक शुरू कर दिया when you just have the test from next one. To avoid that. So I will take the Okay, next then. question. Yeah. So question is like, do they ask only theory related to projects or make us write syntaxes or API calls as well? So for this question, I would just to say about my own experience. Like during my interview experience in Optim, I just like the interview just asked me to say introduce yourself. I started introducing, and I had some internship and projects which I needed to explain well. So I thought like interview will be coming to that project or internship, but he he did it something differently. Like I explained him a project which was like a classroom management application similar to Google Classroom. So I explained him like I made a project in which like we can create a classroom and then we will be getting a short code or something similar to a Google Classroom. We'll be getting a code for each classroom. I made something like that, and I made him like I got that code using some package. Then he suddenly asked, "What was that package?" I told him short ID, some package name. Then he asked, "So what do you think how they implemented it?" And from there, we were discussing about that package, like how they might have implemented that, what might be the logic they are using. And for a 45 minutes interview, this was the half an hour discussing about this package only, nothing else. This was the only part I discussed about my project. Like there was a complete discussion. We opened the editor. He was asking like, can you implement that package by yourself? Like how they are developing random codes and all of these things. So when you are like writing a project in resume, questions can come from anywhere. They might ask you syntaxes, or mostly they might be asking you about the text stack, or questions like general questions on that text stack. Like if it is a React, they'll be asking you about hooks, or in JavaScript there are some fancy topics like debounds. So some topics are there. You might get it like when you are preparing the resume. So just prepare everything in case of theory part, but you can be sure like they will be asking theory only. They can ask something practical also. So if you have done that project and you will be able to do answer them, that is fine. Anything add? Anything you need to add? I think you have added everything. And Yeah. API calls syntaxes के लिए यार as such see मतलब you should be aware about that. It's not like कि वो पूरी की पूरी API बना लेंगे यार, मतलब They won't. it's not possible also. Actually, the project is But made in like 2-3 days, right? They won't ask for But 30 like, minutes. yeah, right. like they can So- ask you what are the get, push, post, what are these calls, what are HTTP, and what are SOAP.
protocols. They can ask such things because you have mentioned that you have worked on API. So API का basic at least आना चाहिए. Think on this that you are mentioning a topic and the interviewer is totally new to it. What the most he can do? He can just type on top 50 questions on APIs and he can ask them on them. Also talking about next question, मुझे अपना प्लेसमेंट का सीजन याद आ गया इस क्वेश्चन से. समीर ने पूछा है व्हाट मैक्स रेटिंग प्रॉब्लम टू अपसॉल्व इन कोड फोर्सेस कॉन्टेस्ट. समीर frankly speak कर रहा हूँ, like there is no such foundation. They go beyond 2500 also. I was giving a OA and उस OA में सबके अलग अलग क्वेश्चंस आए हुए थे एंड मेरी ऐसी किस्मत थी कि मेरे कॉन्टेस्ट में मेरे OA में 2400 रेटिंग का प्रॉब्लम आ गया था एंड बाकी कुछ क्वेश्चंस में एंड उस पार्टिकुलर कंपनी में केवल कोड फोर्सेस के क्वेश्चन पूछ रखे थे और 2 क्वेश्चन पूछ रखे थे एंड जो दूसरा क्वेश्चन था वो 2400 रेटिंग का आ चुका था एंड जो बाकियों से जब मैं डिस्कस कर रहा हूँ एंड आई हैव सॉल्व दैट क्वेश्चन. जो बाकी कुछ लोग से मैंने डिस्कस किया कि हाँ यार ये तो मैंने लगाया हुआ है कोड फोर्सेस में, ये तो 1700 रेटिंग का है, ये 1600 रेटिंग का है. ऑल्सो देयर इज नो सच काइंड ऑफ बाउंड्री कि यार ये मैक्स रेटिंग है बिकॉज प्रॉब्लम सेटर हम जैसे लोग होते हैं एंड हम जैसे लोगों को जो प्रॉब्लम सेटर रहता है उसको चाहिए रहता है पैसा एंड पैसा उसने कहीं से भी क्वेश्चन उठाया लाइक कोड फोर्सेस से उठाया, कोडसेप पे उठाया एंड उसने हैकर रैंक पे डाल दिया एंड उसको उसके पास उसका अलॉटेड मनी आ गया. So there is no such kind of boundary regarding CF contest. Also I will not suggest कि यार अब ये काम करना शुरू कर देना कि भाई तुम लोग 2500 भाई मत करो भाई ये मत करो. मतलब as like I am saying कि यार कोड फोर्सेस अगर पहले से कैरी ऑन कर रहे हो then you should go on with the B and C problems. वो लक पर रहता है यार. मतलब मुझे ध्यान है मेरा एक दोस्त था केमिकल का, उसने कोडसेप पर कॉन्टेस्ट बनाया था एंड उसका जो डिप 1 का जो लास्ट प्रॉब्लम था ना वो हमारे ऊबर के इंटर्नशिप के पेपर में पूछा गया था एंड इट वाज एक्सपेक्टेड टू बी ऑफ 2500 रेटिंग प्रॉब्लम. सो आई एम नॉट सेइंग कि मैं बहुत अच्छा हूं या फिर कोई बंदा जो 2000 प्लस रेटिंग का है वो भी कर पाएगा. आई एम नॉट सेइंग दैट. इवन 2500 रेटिंग वाले बंदे के लिए भी कभी कभी टफ हो जाता है बिकॉज वो थोड़ा सा पैनिक वाला मोमेंट होता है. सो आई एम नॉट सजेस्टिंग कि यार अब तुम वो चीजें शुरू कर दो, लेकिन हाँ अगर तुम कर रहे हो देन जिस लेवल में तुम थोड़ा सा भी फील कर रहे हो कि यार मुझे एक मार्जिन बनाओ ना यार कि अगर तुम 1700 पे हो देन ट्राई टू यार 1800 प्लस के क्वेश्चन तो बनने चाहिए, 1900 के क्वेश्चन तो बनने चाहिए. आई एम नॉट सेइंग कि यार ओए पर्सपेक्टिव से ही चले जाओ एकदम से कि यार ये इस बंदे ने बोला कि यार 2000 रेटिंग का पूछा अब मैं 2000 का शुरू कर दे रहा हूँ. इट्स नॉट लाइक दैट. कंपनी में मैक्स रेटिंग जैसी कोई चीज नहीं होती है. सो और मतलब 2-3 क्वेश्चन एक साथ ले ले रहा हूँ एंड 2-3 क्वेश्चन आप लोग भी एक साथ ले लेना. मतलब आइलर टूर बाइनरी लिफ्टिंग टॉपिक्स थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं. बाइनरी लिफ्टिंग तो थोड़ा सा हमारे टाइम पे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था बिकॉज लीड कोड पर भी जो 4th प्रॉब्लम हुआ करते थे उनमें अक्सर बाइनरी लिफ्टिंग के क्वेश्चंस आ जाया करते थे. सो थोड़े से तो इंपॉर्टेंट है. गो फॉर इट. मतलब पढ़ लो यार, ऐसा कुछ खास नहीं है. इट्स लाइक कि 4-5 लाइन के इम्प्लीमेंटेशन है एंड एक बार पढ़ लोगे ना वो लाइफ टाइम नहीं भूलेगा तुमको बाइनरी लिफ्टिंग. एंड आइलर टूर ऑल्सो. आइलर टूर में कुछ नहीं है यार, बस जस्ट अ टाइप ऑफ कि यार एक DFS है एंड उस DFS में तुम कहाँ पर कैसे चीजों को इंप्लीमेंट कर रहे हो, जस्ट दैट काइंड ऑफ थिंग. आइलर टूर इज नथिंग. इनफैक्ट बाइनरी लिफ्टिंग तो तब भी कुछ होता है. मतलब बाइनरी लिफ्टिंग बस एक बार पढ़ लेना यार, जिस्ट ले लेना, थोड़ा सा समरी ले लेना एंड नथिंग. ऑल्सो टॉकिंग अबाउट एडकोडर कॉन्टेस्ट, मैंने एडकोडर के बहुत सारे कॉन्टेस्ट दिए हैं एंड वर्थ इट तो है, बट मैं बोल रहा हूँ फिर से मतलब डराने की जरूरत नहीं है. एडकोडर इज प्रीटी सिंपल. if you are talking about ABC contest, adcoder beginner contest, then if you are talking about A, B, C and D, तो वो थोड़े से ABC आर बेसिक क्वेश्चंस. इट्स लाइक कि तुम्हारे इम्प्लीमेंटेशन को जज कर रहे हैं एडकोडर में, एडकोडर बेगिनर कॉन्टेस्ट में ABC. तो उनमें A, B एंड C प्रॉब्लम्स जो हैं वो तुम्हारा इम्प्लीमेंटेशन बेसिस पे होंगे. D वाला थोड़ा सा तुमसे ग्रीडी या फिर थोड़ा सा हल्का DP या बाइनरी सर्च पे जाएगा एंड E वाले जो मोस्टली होते हैं वो ग्राफ पर या DP पर या प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस या मैथ्स के क्वेश्चंस उनको फोकस करते हैं. एंड आई विल सजेस्ट कि जो E के जो प्रॉब्लम्स होते हैं ये अगर तुमसे एडकोडर के E प्रॉब्लम्स तक बनने लग जा रहे हैं या फिर कभी कभी F भी बन जा रहे हैं, देन यू आर इन वेरी गुड कंडीशन बिकॉज बहुत अच्छे कंडीशन में हो. थोड़ा सा कैरी ऑन कर ले जाओ. मतलब कैरी ऑन करने का मतलब कॉन्टेस्ट दे लो.
शाम को आई गेस 5:30 बजे होता है सैटरडे को एक्वेडोर के बिगनर कॉन्टेस्ट. सो यू शुड गो ऑन विथ इट. 1 घंटे का कॉन्टेस्ट दे दो एंड प्रैक्टिस थोड़ा बहुत कैरी ऑन कर लो. बट जिन्होंने नहीं किया है, आई एम सेइंग बहुत ज़्यादा सिंपल होता है भाई. तुम लीड कोड पर ही फोकस करो, एडकोडर कुछ नहीं होता. ऐसे ये सब बस 4-5 नाम लिख दो कि यार ये फैंसी सा नेम एडकोडर, एक कोड फोर्सेस, एक कोड सेफ. भाई कुछ नहीं है, सब जगह सेम ही चीज़ें मिलनी है. लीड कोड पर जो नहीं किया है अभी तक, लीड कोड पर ही स्टिक रहो. That's my point. So also guys, for you, no, Nabbe and Just to add, like for those people who think like doing I haven't done anything in code forces, so I won't be performing well in that. So I just need to add like you don't need to worry about code forces. If you are not doing it, it is also fine. For example, I am still a newbie in code forces. I haven't done much problem in that. I haven't done contests at all. Like I would suggest like do contests. That's one mistake I have made, but do contests. It's good only. But practicing in code forces is up to you. But this time I won't suggest to do problems in code forces. Focus on lead code. Even if you are not doing it in code force, it's fine only. Focus on lead code. Do as much as possible as can. Then study more DSA topics. Like not to just not to just learn, understand them properly. Like every basics of them for each and every data structure and everything. Understand it well. This OAuth and all these things are there, right? So you need to know about them. Memory taken, time taken, all of this. Navi? Pretty much you have summarized you both. So regarding LLD करना है क्या? Companies ask it. There are companies which ask LLD. मीशो ने ही पूछा था फर्स्ट राउंड उसका 1.5 घंटे का एलएलडी इज लाइक, हाँ मतलब एलएलडी ही था. और फर्स्ट राउंड उसका एलएलडी ही था 1.5 घंटे का. एंड उन्होंने टेस्ट भी रन करवाए थे. या गो ऑन नंबर. I was just saying practice it out for the companies which ask LLD. So there are not, I guess, day 1 and 2 key companies mostly LLD पूछती भी है. Yeah, some Beyond companies that, are there, like specific companies only, not every company. Right. Zomato asked, I remember. If you are targeting Meesho, then you should go on with the previous questions कि यार LLD में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. So you will be aware about the thing कि यार not that much in depth of LLD कि यार मुझे solid principles भी आने चाहिए. इनफैक्ट मुझे ये चीज़ें बोलनी नहीं चाहिए, बट ठीक है. मतलब LLD नहीं है वो, मतलब बेसिक है वो. बेसिक तुम्हारे इम्प्लीमेंटेशन को जज करते हैं वो लोग. दे आर नॉट जजिंग योर LLD पार्ट. They are judging your coding part, implementation part, how you implement, how you manage time. So वो चीजें रहती हैं. So basically these solid principles, even though if you are not covering LLD completely, if possible, try to cover the solid principle, because it's very important in a software company. Like even after Optim, the first thing they had to like complete some courses, and the solid principle was one of them. So they need it. So just understand, like they are very simple. If you are understanding it clearly, it's very simple. So just go through it. मतलब कर सकते हो. हाँ, सॉलिड प्रिंसिपल्स में कुछ नहीं है. 1 घंटे का वीडियो है. इट्स लाइक अभी तुमको कुछ समझ नहीं आएगा. जब तुम कंपनी में काम करना शुरू करोगे, देन यू विल गेट टू नो कि यार सॉलिड प्रिंसिपल कितना इंपॉर्टेंट था यार. अभी तो तुमको लगेगा कि यार क्यों करना है यार, ये मतलब क्यों अलग कर रहे हैं, मतलब ये बकचोदी कर ही क्यों रहे हैं कि भाई 2 चीजें सबको इम्प्लीमेंट करके ये अलग भाई क्यों कर रहे हैं. कर दो एक ही में, मेरा भी आसान तुम्हारा भी आसान. बट व्हेन यू वर्क इन कंपनी, देन यू विल गेट टू नो कि यार वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. बट अभी के लिए 1 घंटे का वीडियो रहेगा, किसी का भी देख लेना. My last question, that companies ask OA questions in particular language. Yeah, there are companies. FICO, I remember, asked particularly in Java only. And I guess there were 2 or 3 more companies which which gave option of Java or JavaScript. And 1 to 2 companies जो ML based काम करती है, they asked for Python language. So it's just like there will be maximum of 10 companies जो एक particular language पे stick करी. Otherwise, mostly everyone will ask C, C++, Java. They will give options. So you can have a research on the company hiring process. You can get even on GFG, Google पे ही search कर लेना for a particular company interview experience या OA experience. वहाँ पे तुम्हें पता चल जाएगा if they ask in a particular language or not. So I guess these were the questions. समीर का क्वेश्चन है इसके बाद, ये कौन सी कंपनी थी जिसमें CF के हार्ड आए थे? द कंपनीज लाइक Uber, if you are targeting
somewhat like if you're targeting media.net, then तुमको क्वेश्चंस नहीं मिलने वाले. Also they challenge you. कि भाई मैं तो पूछूंगा, मैं तो 1 महीने से यही क्वेश्चन लगाऊंगा, तुम्हारे अंदर गट्स है तो तुम इसको लगा के दिखा दो, तुम 3 आउट ऑफ 3 करके दिखा दो, मैं 5 आईआईटी में सेम क्वेश्चन पूछूंगा, इफ यू हैव गट्स देन यू सॉल्व 3 आउट ऑफ 3. एंड उसके बाद भी उन्होंने मेरा मीडिया.नेट में शॉर्टलिस्ट था. इनफैक्ट माय इंटरव्यू गोज वेरी वेल. उससे अच्छा इंटरव्यू मैं आज तक नहीं दिया हूँ. इनफैक्ट नॉट इन मीशो ऑल्सो. उससे ज्यादा कॉन्फिडेंट और उससे ज्यादा अच्छा इंटरव्यू मैंने आज तक नहीं दिया है. बट दे didn't even shortlist a single person from first interview. सेकेंड इंटरव्यू में किसी को जाने ही नहीं दिया. इनफैक्ट नॉट इन सिंगल आईआईटी ऑल्सो. पूरे आईआईटीज में एक भी शॉर्टलिस्ट नहीं है फॉर एसडी. आई एम टॉकिंग अबाउट एसडी. मीडिया.नेट ने कोई भी शॉर्टलिस्ट नहीं दी थी. मीडिया.नेट ने बेसिकली. तो ये सब कंपनीज जो होती है ना, थोड़ी बहुत मीडिया.नेट, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट उबर, कभी कभी स्प्रिंकलर भी अच्छे क्वेश्चंस पूछ लेती है, और कोऑर्डिनेशन, और मतलब ऐसे जो थोड़ी सी डे 1 या डे 2 टाइप की कंपनीज रहेंगे ना, वही बेसिकली थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस पूछेंगे. फाइनली डिपेंड्स ऑन योर लक कि उस दिन कैसा दिन था. यही बात. So you can't do anything. This is on the first priority. I am saying ना कि मैंने अभी कॉन्टेस्ट बताया ना कि मेरे ही ओए में एक 2400 रेटिंग का क्वेश्चन आ गया, एंड बगल वाले बंदे के कॉन्टेस्ट में 1700 रेटिंग का क्वेश्चन आ गया, जो कि मैंने लगाया हुआ है. और अगर वो क्वेश्चन मेरे पास आ जाता देन आई वाज एबल टू सॉल्व ना, और मेरी शॉर्टलिस्ट भी आ जाती शायद. सो टोटली बेस्ड ऑन लक आल्सो. Yeah. So entire placement is like 70% luck, 30% your skills. So don't get worried about something. And last question, what should be the optimal order to solve problems in OA, hard to easy or vice versa? It totally depends on, like तुम लोगों ने जो एडवांस दिया था, you knew how to solve for yourself. पहले केमिस्ट्री करना कि मैथ करना कि फिजिक्स. Here also you know if you are able to keep your calm after doing the hard question. Hard question पे 10 मिनट 20 मिनट अच्छे से दे दिया, और उसके बाद भी ठीक है, दिमाग शांत है कि इजी क्वेश्चन जा सकते हैं, then only go. Otherwise go for easy first and complete it quickly so that you can dedicate more time to hard. It totally depends from person to person. Also मैंने ये तो अपने ही पेपर में एक्सपेरिमेंटेशन किया था. आई वाज लाइक, मैंने स्टार्टिंग में सोचा कि यार ऐसा करते हैं. मैं तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था. मैंने तो कहा भाई मचा देंगे, प्लेसमेंट में क्या रखा है, प्लेसमेंट तो मतलब ऐसी की तैसी. सो मैंने कहा कि यार मैं तो हार्ड से ही शुरू करूँगा. आई डोंट गिव अ फक. मैं तो हार्ड से ही स्टार्ट कर रहा हूँ. एंड एक दो वेज तो मेरे ऐसे चुदे कि फिर मैं इजी से ही स्टार्ट करना शुरू कर दिया. सो ओवर कॉन्फिडेंस इज ऑल्सो अ थिंग. ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कभी भी किसी को. ठीक है, आप भले ही कितने भी अच्छे हो, यू आर वेरी वेरी गुड स्टूडेंट, बट ओवर कॉन्फिडेंस इज अ थिंग जो आपको नीचे गिराएगी ही गिराएगी. सो स्टार्टिंग में मैंने भी स्टार्ट किया था कि यार हार्ड से इजी करते हैं. सो व्हेन यू आर approaching this approach, you are going through this approach कि यार हार्ड से इजी की ओर करते हैं, एंड यू आर अ बेटर कोडर, यू आर अ बहुत बढ़िया कोडर हो, देन लेट अस सपोज मैं क्या करता था, मेरी तो यही स्ट्रेटजी थी पूरे कॉन्टेस्ट में कि मैं 3 प्रॉब्लम्स हैं तो मैं स्टार्टिंग के 15 मिनट्स दे देता था तीनों प्रॉब्लम्स को पढ़ने में. देन स्टार्टिंग के 15 मिनट्स मैंने पढ़ लिया, थोड़ा बहुत कुछ जिस्ट भी ले लेता था कि यार इसके लिए इस डायरेक्शन में सोचूंगा, इसके लिए इस डायरेक्शन में सोचूंगा, एंड फॉर दिस आई विल गो टू दिस डायरेक्शन एंड दिस टॉपिक्स. सो स्टार्टिंग 15 मिनट्स ये करता था. एंड देन स्टार्टिंग के वेज में मैंने क्या किया कि मैंने हार्ड प्रॉब्लम को उठाना शुरू किया. एंड व्हेन आई स्टार्टेड पिकिंग अप हार्ड प्रॉब्लम्स, देन कभी कभी लाइक मैंने जोमेटो का, मुझे उस चीज का गिल्ट आज तक है, जोमेटो का जो मैंने पेपर दिया था. एंड जोमेटो का मैंने सबसे हार्ड वाला क्वेश्चन, इनफैक्ट एक क्वेश्चन उसमें रिपीटेड भी था, एंड आई नो कि ये क्वेश्चन रिपीटेड है, एंड आई लेफ्ट इट आउट कि यार मैं इसको लास्ट के 10 मिनट में कर लूंगा. सो मैंने सबसे हार्ड वाला प्रॉब्लम उठाया एंड आई स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग इट. ओके, एंड जब वो रॉन्ग होना स्टार्ट हुआ, मतलब ओनली आई वाज लाइक 10 आउट ऑफ 15 टेस्ट केसेस वर पास्ड. सो इट गोज टू माय ईगो कि यार ये पहली कंपनी है एंड आई एम अ कोडर जो कि बहुत अच्छा कर चुका है. ठीक है, सो ये हो कैसे नहीं रहा है, हाउ इज दिस क्वेश्चन, मतलब ये हो कैसे नहीं रहा है. इट गोज ऑन योर ईगो. सो ईगो को उस टाइम पे साइड में रखो भाई. ठीक है,
क्योंकि जो ओएस होंगे दैट आर नॉट गोइंग इन इगोइस्टिक मैनर, सो ईगो को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दो. इफ यू आर अ वेरी बेटर कोडर देन काफी टाइम ऐसे आता है कि यार तुम इगोइस्टिकली चीजों को लेने लगते हो. एंड जो क्वेश्चन कभी कभी तो ऐसा होता है कि यार ये तो हमने देखा हुआ क्वेश्चन है एंड आई एम डूइंग एवरीथिंग वैसे का वैसा कर रहा हूँ जो सोचना चाहिए, बट कोई छोटी सी चीज रह जाती है यार तुम्हारे इम्प्लीमेंटेशन में, कभी कभी तुम्हारे सोचने के तरीके में. सो यू शुड गो ऑन, यू शुड एबल टू स्विच द क्वेश्चन. अगर तुम कहीं फंस जा रहे हो यू शुड बी एबल टू स्विच द क्वेश्चन. डोंट गो इन इगोइस्टिक मैनर फॉर ओएस. ये इसमें तुम्हारा ही लॉस है. तुम बहुत अच्छे प्लेयर हो, तुम बहुत अच्छे कोडर हो, बट यू विल, मैंने तो इसके चक्कर में बहुत ज्यादा कंपनीज लॉस की हैं. इनफैक्ट बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज लॉस की हैं. बट मैंने फिर ये स्ट्रेटजी बनाई ना यार कि एक इजी करता था देन आई गो फॉर हार्ड एंड देन मैं बहुत जल्दी स्विच करता था. आई वाज लाइक कि मैंने सोचा अगर मैं 5 मिनट्स में इस हार्ड प्रॉब्लम का पूरा एक्चुअल सोल्यूशन मेरे पूरा रोड मैप मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, आई विल स्विच टू मीडियम क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन. और अगर रोड मैप आ जा रहा है देन आई यूज टू इम्प्लीमेंट इट. और अगर किसी भी पॉइंट पर स्टक हो जा रहा हूँ लाइक 7 आउट ऑफ 15 और सम आउट ऑफ 15 देन आई विल लेफ्ट इट आउट. यार मैं लास्ट में देख लूंगा, ठीक है यार, देखा हुआ प्रॉब्लम है तब भी ठीक है, नहीं देखा हुआ प्रॉब्लम है तब भी ठीक है. डोंट गो इन इगोइस्टिक मैनर. ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि तुम किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हो. थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटेशन कर लो, थोड़ा सा. इट्स लाइक कि अगर तुम लीड कोड के प्रॉब्लम्स दे रहे हो, लीड कोड्स के कॉन्टेस्ट दे रहे हो, तो उसमें 4 क्वेश्चंस आते हैं. ट्राई करो कि यार नीचे से स्टार्ट करो, कभी ऊपर से स्टार्ट करो, कभी ये वाली स्ट्रेटजी कि यार पहले सबसे पहले इजी वाला लगा लिया देन सबसे हार्ड वाला, देन इस तरीके से चलो. देन यू शुड एक्सपेरिमेंट. सो सबकी अलग अलग स्ट्रेटजी होती है, सबका अलग अलग दिमाग होता है, सबका अलग अलग इगोइस्टिक मैनर होता है, सबका अलग अलग टाइम मैनेजमेंट की स्किल होती है. सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि कैसे तुम अप्रोच कर रहे हो. I guess these were the doubts. क्या हुआ 90? I guess doubts khatam in chat. हाँ डाउट्स खत्म हो गए यार. So I think we're done with the questions. Thank you Yeah. so much for all of your valuable time and guidance, Via. And this has been a truly insightful session. I'm confident it has significantly helped our audience gain a better understanding of the SDE field. Now I have the honor of presenting an e-memento, which is a digital token of appreciation to all 3 of our seniors. Thank you. Thank you. थैंक यू. I would like to present this to Shijit Bhaiya. Thank you. सो ये ऑनलाइन ही दे रहे हो क्या यार? ऑफलाइन दो यार. भैया e-memento है. Deliver. e-memento. Okay, got it. Okay. And this one for Nitin Dwivedi Bhaiya. Thank you, And bhai. this one, Navya Bhaiya. Thank you so Thank much. you. Thank you. One thing I just need to say, like, for any of you, if you have any doubts or anything, you can contact any senior, you can contact us also. Like, everyone's doubt will be changing according to the time. Like, we will be having a lot of Right. doubts, so you can contact us at any time. You can Also, reach यार out अगर to us on LinkedIn. Yeah. लिंक्डइन भी Yeah. बहुत बेटर. ऑल्सो यार जिसके पास बहुत ज़्यादा टाइम है ना, जिसको लग रहा है कि यार आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट, मेरा डीएस से स्किल भी ठीक ठाक हो गया है एंड ऑल्सो सीएस फंडामेंटल भी थोड़ा बहुत हो गया है एंड ऑल्सो ये प्रोजेक्ट वाला पार्ट भी हो गया है. यू शुड ट्राई टू फोकस ऑन C++ के जो बेसिक्स होते हैं, एज लाइक हैश मैप का इम्प्लीमेंटेशन, मैप का इम्प्लीमेंटेशन एंड हैश टेबल्स ऑल्सो एंड वेक्टर का इम्प्लीमेंटेशन. many of you will shock, लेकिन सिस्को के इंटरव्यूज में वेक्टर का इम्प्लीमेंटेशन पूछ रखा था बंदों ने. मतलब वेक्टर का इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते हैं एंड इट इज अ वेरी शॉकिंग थिंग. मेरे लिए भी बहुत ज्यादा शॉकिंग चीज थी यार, कैसे कितना अच्छा सोचा था, मतलब जिसने भी वेक्टर बनाया कितना अच्छा सोचा था, कितना प्यारा सोचा था. या ऑल्सो तुम लोग को बहुत ज़्यादा नई नई चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी. लाइक जो डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, उनके इम्प्लीमेंटेशंस पर एक बार फोकस ज़रूर करना अगर तुम्हारे पास टाइम बचता है तो.
लेकिन हैश मैप वगैरह के इम्प्लीमेंटेशन देख लेना यार, मतलब कंपनीज पूछ लेती हैं, खासकर डे 1 डे 2 की। बाकी आई एम अगेन सेइंग, अगर टाइम बचता है तो, जिसके पास बहुत ज़्यादा टाइम बच रहा है ना, बोर सा हो रहा है कि यार कुछ करने को नहीं है, मैंने लीड कोड भी फाड़ दिया, मैंने सीएफ भी फाड़ दिया, मैंने ये भी फाड़ दिया, वो भी फाड़ दिया, दे कैन डू इट, दे कैन गो फॉर इट। Also, try to give 1 or 2 mock interviews before your actual interview comes. November May, I guess it is conducted by SAIC, so you can give them. दोस्तों से भी बात करना शुरू करो, दोस्तों के बीच में भी इंटरव्यू करना शुरू करो फ्रॉम योर स्टार्टिंग ऑफ नवंबर, या फिर उससे पहले भी, जब भी तुम लोग कंफर्टेबल हो, जब भी तुम लोग कॉन्फिडेंट हो। दोस्तों से तो बहुत ज़्यादा अच्छा बॉन्डिंग हो जाती है, बिकॉज उनसे तुम्हें बुरा नहीं फील होगा, बिकॉज वो भी उसी लेवल पर रहेंगे। एंड इफ यू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश लाइक नो 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 नो, इट्स लाइक, सो वो तुमको जज नहीं करेंगे, ओके, बिकॉज वो भी उसी तरीके से रहेंगे एंड हम भी उसी तरीके से हैं, लिटरली गाइस। सो जज नहीं करेगा कोई भी। सो स्टार्ट विथ योर फ्रेंड्स एंड देन गो फॉर SAIC, बिकॉज वहाँ पर जो तुम्हारे सीनियर्स आते हैं वो काफ़ी दिन से काम कर रहे होते हैं एंड दे आर मच एक्सपीरियंस्ड। सो अगर तुम एक बार एक्सपीरियंस लेके जाओगे ना एंड यू आर कॉन्फिडेंट बिफोर दैट, तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी वो चीज़ें, है ना। तो वो मेरा एक सजेशन है। सो दैट्स अ पॉइंट। Yeah, communication skills are very important in interviews. So try Right. to improve in this way. Like you can practice with your friends. So like by the time before interview, like in November itself, you can have mock interviews with SIC, or you can have mock interviews with your friend. And once you are done with the mock interviews with your friends, you can try it to the seniors also. Like you can ask password seniors, you can ask them in LinkedIn also. So most of them will be agreeing for a mock interview session. So as much as you do, you'll be more confident in that. Anything? ऑल्सो प्लेसमेंट कैसा जा रहा है, मतलब थोड़ा सा जिस्ट दे दो यार, मतलब पता तो चले प्लेसमेंट क्या कर रहा है, मतलब हाउ इज द सीजन लुकिंग लाइक, कि हाँ कैसा हाँ, माहौल current अभी तो experience. स्टार्ट हुआ होगा। एनीवन? I guess no experience. सब या सो शेयर गए। करने वाला, या शेयर करने वाला नहीं है, या शेयर करने के लिए नहीं है। सी, दो चीजें हो सकती हैं, या तो प्लेसमेंट सीजन बहुत बहुत अच्छा जा रहा है या फिर प्लेसमेंट सीजन में कुछ लोग डर गए हैं। सो दो चीजें हो सकती हैं, बट जो भी है तुम लोग बता सकते हो, बिकॉज हम भी उसी उसी चीज़ों से, उन्हीं चीज़ों से एक साल पहले गुजर रहे थे कि यार ये कंपनी नहीं आ रही, यार इस दोस्त का लग गया, यार अरे कैसे लग गया भाई, इसका कैसे लग गया, दीज काइंड ऑफ थिंग्स हो जाती हैं। सो डोंट गो फॉर इट, बिकॉज जिसका भी आप सोच रहे हो कि यार इसका कैसे लग गया, उसने कहीं ना कहीं मेहनत की हुई होती है, ओके। डोंट थिंक कि यार मैंने ज़्यादा मेहनत की है, तुमने आज ज़्यादा मेहनत की है, हो सकता है तुमसे पहले जब तुमने कम मेहनत की हो तब उसने ज़्यादा मेहनत की हो, बिकॉज कर्मा हमेशा तुमको देगा, ठीक है, प्रॉपर प्रोपोर्शनलिटी में देगा, आज नहीं देगा तो तुमको कल देगा। सो दैट्स द माई पॉइंट। तो डोंट थिंक इन दैट मैनर कि यार उसकी कैसे लग गई एंड इसकी कैसे नहीं लगी। सो लक लक डिपेंडेंट होती हैं यार चीज़ें, प्लेसमेंट इज मोस्ट ऑफ लक डिपेंडेंट, बट या चीज़ें हेल्पफुल भी रहती So just to summarize that, अपना मेहनत करना, just keep on improving yourself. My friends का जो लगेगा, it was because of they improved themselves and they got to that level. So just keep focusing on yourself, and there's no need to get jealous of your friends too, because you will realize that they are your greatest supporters too during this placement season. या। And at last, अगर if the placement season is down, it is for everyone. So don't think that all the इवन हमारे टाइम तो यार assessments are with you. मैंने तो शायद 20 या 25 कंपनियों में ही फिल किया था, आई गेस। मेरे मेरे टॉकिंग अबाउट मी पर्सनल एक्सपीरियंस, तो 25 कंपनियों में आई गेस मैंने फिल किया था, एंड जिसमें से 20 कंपनियों के मैंने टेस्ट दिए थे। 5-6 कंपनियों के तो टेस्ट शॉर्टलिस्ट से ही हटा दिया था कि भाई हटो, तुमको नहीं ले रहे। तो ऐसी सारी चीजें थी। Yeah, don't let, like, if you are getting something bad in any interview or any OIR test, don't take it bad and feel depressed or something. Right. Just take it like that. Like it depends on luck also somewhat. So it's not your fault. You have done well, so don't take it to heart. Do it well in the next round.
maybe next interview or maybe or next OA test, there you will be having like, so don't take it bad. Because many times it will happen like you will be doing your best, but even after that you won't be getting that. Just learn from whatever went wrong and improve it next time. At So the end, all the सब कुछ best ठीक for at just the all end the कुछ best for the upcoming placements. yeah Yeah, all from the Just my best, side. guys. focus on yourself and give your best. Okay then. Okay, किसी thank you, Via. नहीं है तो On I behalf guess of the entire Career Council and all the audience, I would like to extend a heartfelt gratitude to all three of you for your valuable insights and expertise. Your guidance has been incredibly helpful. We appreciate the time and effort you've put into making this session a success. Before we end this session, I would request all of you, all the audience, to turn on your cameras for a group photo. I guess guys are leaving जब उनको कैमरा ऑन करने के लिए बोला गया है This is what we also done. Online हाँ times. Okay. Thank you, Bhaiya. Now, on this note, I would like to sign off. Thank you, everyone, for joining and for being such a great audience. Your participation has made this session a success. Thank you, guys. Thank Thank you you. guys. Bye. Okay, bye. All the best Bye. for your All future the and best for your placement. Bye. bye bye.